वेदांत गिरी महाराज कोलकाता। Release of the book Concept of Indian Heritage, written by Dr. Ramakrishna Shastri, by Mrs. Nirmala Sitharaman, Minister of State. भगवान प्रार्थना सुनिए श्री भगवान कीजिए जन जन का कल्याण प्रार्थना सुनिए श्री भगवान। Mr. Saurabh Khemani. I'm extremely sorry, Monday is the budget, because I had promised I would be in your company. I came in, scholars are before me. There's not that much I can say, but you're doing extensive work, I understand, on Vedanta and propagation of Vedanta. Good lot of scholars are working here. I wish all of you all the very best and my good wishes. Thank you very much. We are really proud and overwhelmed for her presence in our conference. As she is busy for the budget session, we thank you, madam, for your presence here. Reading of Veda Mantra by Dr. Rabindranath Bhattacharya. वागुत्सृष्टा स्वयंभुवा आदौ वेदमयी दिव्या यतः सर्वा प्रवृत्तयः हरिः ओम् स्वस्ति नो मिमेता मशिविना भगस्वस्ति देव्या। All the delegates coming from different parts of the world and all the delegates of India gracing this conference as guest of honor and speaker and other respected dignitaries present in the audience. Ladies and gentlemen, Indian Institute of Oriental Heritage has entered its 39th year. On this festive occasion, I cordially welcome you all. Heritage is the subject. It is a full of range of our inherited traditions, culture, contemporary activities, meanings, behavior that we draw from them. Heritage is the subject of active public reflection, debate and discussion.
the past that is entitled to speak for past generations. Active public discussion about valuable subject of our past is a valuable fact for our present. Heritage is an essential part of the present we live in and of the future we will build. India, throughout years, has lost its vitality. It has forgotten its preaching of philosophy and ancient subjects like Veda, Vedanta, Upanishad, Jyotish, astronomy, Tantra, and Sanskrit. The ancient charms and graciousness of India is getting eradicated. People's attitude towards life is now rapidly becoming materialistic. The glamour of Western way of life and the idea of material prosperity has modified the present Indian ambitions. The quid of success has dazzled our eyes, and some of us have started looking down up to the old traditions and heritage. The result, however, have not been very good. We are losing our roots. Blind imitation of the West will just make us get lost in the blind alley. Indian Institute of Oriental Heritage has been leaving no stone unturned to create a congenial atmosphere for the scholars belonging to one or the other streams of Oriental learnings to do their best for bringing about welfare of mankind. Let us hope and pray that the participant will stand to be benefited by attending the conference and will see the worth of ascertaining some new findings experienced by the scholars present here. With this, I wish all your active participation and sincere cooperation in making the 3-day program of the conference an all-round success. May this year fill you up with joy, happiness, success, and prosperity. I convey my best regards to elders and dignitaries present here. Thank you all. Now, speech by Dr. Shaugato Mitro, Chairman 39th Annual Conference Committee. Chancellor of the Indian Institute of Oriental Heritage, Dr. Satyanarayan Chakravarti, Vice Chancellor Dr. Ramkrishna Sastri, President Dr. Gopa Sastri, Secretary Mr. Amal Kishore Sastri, dignitaries on the stage, ladies and gentlemen. It's a privilege and honor to welcome you. More so, we could get the presence of the Honorable Minister in spite of her busy schedule for the budget session, but she did spare a few minutes or half an hour for us. So that shows that she did keep her commitment. Now, speaking on Oriental heritage, ladies and gentlemen, I am a dwarf among the swans of wisdom, the people of profound knowledge, which is present in this hall. So with my limited knowledge on this field, I would like to say a few words on this subject and whatever with your permission. Now, let me draw your attention, and I will quote the famous American author Mark Twain, who once said, "India is a cradle of the human race, the birthplace of human speech, the mother of history, the grandmother of legend, and the great-grandmother of tradition. Our most valuable and constructive materials in the history of man are treasured up in India only." What a great kind of tribute to this country. What kind of rich heritage of this country. This was the country which gave the world the mathematical construct, the algorithm, algebra, geometry was given by India to the world. Even Aryabhatta's zero, which he as an astronomer discovered, without which no mathematical construct is possible
or no numerical is possible. Arthashastra, the book or the treatise on statecraft, polity, economy, was something which is still in use. Vastu Shastra is the architecture which was at that point that gave the world on architecture. And it still continues, and it's still in use, and it's still in prevalent. Ayurveda still remains an area of medical science without any side effect, and which is a complete cure. Trade, commerce, art, culture, dance, these were the heritage of the country. Last and but not the least, the knowledge of all knowledge, the nectar of all wisdom, Vedanta, Upanishad, and Yoga was given to the world for the humanity. And such was the glorious past of the country. Such was the richness, the material richness and the spiritual richness, that in the year 1835, Lord Macaulay, in his speech to the British Parliament, and which I will quote, and he said, "Your Majesty's government may note that I have traveled across the length and breadth of India, and I have not seen one person who is a thief. Such wealth I had seen in this country, such high moral values, people of such high caliber, that I do not think we would ever conquer this country unless we break the very backbone of the nation, which is her spiritual and cultural heritage. And therefore I propose, Your Majesty, that we replace her old and ancient education system, her culture, for if Indians think that all that is foreign and English is good, they will lose the self-esteem, the native culture, and they will become what we want them to be, a truly dominated nation." That was the heritage of that country, which Lord Macaulay, not late in 1835, spoke in the British Parliament, and which testifies the richness as late as 1835. Today, the world is in pain. Human society is in agony. Over 2 billion of the world population lives or strives with $2 per day, which is barely to survive. World is affected by terrorism. World is affected by unemployment. World is affected by malnourishment. The youths have become directionless. And the world is looking to the Eastern philosophy, the Indian heritage, as a panacea for their illness. As late as 1940, not late, as early as 1940, one of the greatest thought leaders, ideologue, Pandit Dindayal Upadhyay, had propagated the concept of integral humanism, which is that the material progress and the spiritual progress needs to go together. The body, mind, and intellect needs to move together. And today, the West is suffering because there's a lack between the material growth and the spiritual growth. And this, had they listened to Pandit Dindayal Upadhyay's integral humanism at that point of time, the world would not have been pain. This conference, ladies and gentlemen, is primarily to regain the glory of the Eastern philosophy, the heritage of the past, the heritage of India, so that humanity, the world, lives in happiness, people are progressing, and there is an overall growth of the human society. Thank you, ladies and gentlemen, for your patient listening. नमस्कार। एज ए कन्वेनर मैं इतना ही कहता हूँ
ओरिएंटल रिसर्च हेरिटेज पिछले 40 साल से, पिछले 39 साल से, इस साल 39 है, 39 साल से निरंतर भारत का प्राच्य विद्या का रक्षा करने का लिए काम कर रहा है। मोदी सरकार आने का बाद में प्राच्य विद्या का बहुत उन्नति का लिए उन्होंने भी प्रयास कर रहा है, और हम लोग जो छोटा छोटा ऑर्गेनाइजेशन है हम लोग भी कर रहा हूँ। तो इसलिए आइए, आप लोग को सबका पास मेरा गुजारिश है कि आप लोग अपना अपना जगह में जाकर प्राच्य विद्या का रक्षा कल्प पे जो जो कर सकते हैं वो कीजिए। बहुत सा मंदिर इंडिया में एकदम बिल्कुल उसका ऊपर पेड़, उसका ऊपर कुत्ता आके बैठते हैं, सब नष्ट हो रहा है। भाइयों, उसको रक्षा के लिए आप लोग निरंतर प्रयास कीजिए, हम लोग भी प्रयास कर रहा हूँ। I welcome you all. Thanks everybody for the delegates who have come from a lot of distance, from different corners of the globe for this conference only. It is a rare privilege that I say a few words here that imparts teaching and training in Sanskrit literature, the Vedas, the Upanishads, all the branches of Indian philosophy, Shankha, Yoga, Nyaya, Purva Mimamsa, Uttar Mimamsa, Vedanta. An institution that takes care for the vast treasure of the Puranas, Jyotisha, Smriti, Tantra, Ayurveda, mathematics, an institution that takes care, that takes much interest in a number of fine arts like dance, music, drama, etc. And it is an institution that does not ignore the impact of the fast growing modern science. My dear friends, esteemed delegates, right from the journey of blossoming of human knowledge in the Vedas, which proclaim human beings as its child of immortality. You know, Amritasya Putraha, Srindantu Vishwe Amritasya Putraha. To the very recent creative writings in the Sanskrit, we can sense the eternal fragrance of spirituality. Eternal fragrance of spirituality. Can feel the touch of eternal divine bliss of every single being, irrespective of caste and creed, animate or inanimate. We feel proud to be Indians, since we inherit such an immense treasure of all the values, a treasure that leads human beings a perfect balance of enjoyment and sacrifice. It is not only the enjoyment as the Westerners think of. It is a balance between enjoyment and sacrifice. Tyaga and Bhoga, both met together, past and present, both meet together here. It is for this institution that we learn these things, sir. Religious works. One is Ishta. Tesham Manushanam Kite. Ishtapurta is good. But the problem is, Ishta is something for the welfare of yourself only. By Ishta, that means by offering sacrifice, etc., by doing sacrifice, etc., you attain Punna. Punna goes to you. I get the Punna. It is for me that I get Punya. But when it is a question of Purta, Purta means, you know, Purta means PWD works. Purta means PWD works. Construction of some temples, construction of schools, construction of hospitals, construction of roads.
erection of ponds, wells, etc. These are called Purto, PWD works. If it is a question of Purto, it is not heaven. It is not heaven that you attain. It is moksha that you attain. So, for ishto, for sacrifice, you attain punno, heaven, which is limited to you only, one person only, whereas for purto, you attain moksha. And as you know, moksha is 1,000 times, lakh times more than greater than Swarga, Svarga. Moksha is our eternal bliss. Punarupi jananam, punarupi maranam, punarupi janani jatare shayanam, ityadi samsara avartanam tatra ruddham bhavati. Moksha eva eternal bliss. And it is by purto that we attain moksha. By sacrifices it is only heaven. And please remember, these words is not written by me on a piece of paper. These are the words of our ancient Indian religious scriptures. So, I think now is the time for you, all the delegates here, to think about this, that we must take note what is the real intention of our Indian Shastras. We must give some different outlook. We must know the tricks to read Shastras in different outlook, and then we will understand that Indian Shastras are something eternal treasure. It is our heritage, and this is this institution for the preservation of Indian heritage. आप लोग तालियों से स्वागत करिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ओरिएंटल हेरिटेज के प्रेसिडेंट डॉक्टर गोपा शास्त्री को सम्मान दे रहे हैं. Welcome with tilakam, floral ovation, garlanding and wearing of angavastra and badges. Felicitation our guest with tilakam, garlanding, wearing of angavastra and badges by the President Dr. Mr. Gopa Shastri. Honoring with garlanding, wearing of angavastra and badges by Dr. Ram Krishna Shastri and Dr. Amol Krishna Shastri. Mr. D.C. Dasgupta. Mr. Gurdeep Singh. Honoring Mr. Gurdeep Singh were garlanding, wearing of angavastra and badges by Dr. Ram Krishna Shastri and Dr. Amol Krishna Shastri. Mr. Devashish Shamadar, Mr. Chandan Kumar, Mr. Seta Kumari, next Mr. Lalit Prabhakar and Mr. Abhimanyu.
Now honoring doctorate to Mr. Kadaya Sastry D. Hiramat from Maharashtra. Honoring doctorate by our Chancellor, Professor Satyanarayan Chakraborty, Vice Chancellor Dr. Ramkrishna Shastri, and Chairman Professor Dr. Srimati Gopa Shastri. Hello everyone, I am proud to be here in the 39th annual function of International Oriental Heritage. So we are from Bangalore, Karnataka, representing our Karnataka Akhila Priest Organization, so headed by Dr. KSN Dikshit sir. So we will be felicitating Dr. Ramakrishna Shastri sir for all the opportunities he has given us and the achievements of organizing this function, the National Annual Function Conference. Please give a big hand. Thanking you, everyone. Now, conferment of Gem of Asia Award to the eminent scholar of the globe, Mr. Kodakal Shiva Prasada, Simoga, Karnataka. Now, conferment of Rashtriya Gaurav Award to the Vice Chancellor of different universities. Professor A.K. Singh, Vice Chancellor, Rajmate Vijay Raje Scindia, Krishi Vishwavidyalaya, MP. Professor Dr. A.K. Singh, Vice Chancellor, Rajmate Vijay Raje. Next, Dr. G. Bhaskaran. Before that, short speech by Professor A.K. Singh. My deepest sense of gratitude to the honor that the Indian Institute of Oriental Heritage has bestowed upon me. I think the Indian Institute of Oriental Heritage, the mandate that it is serving is probably unique in this country and probably all over the world. I think the have imbibed over the centuries, and the efforts that this institution is making to spread this is really unique. And I congratulate the organizers for this conference and for the activities that they are indulging in spreading the knowledge and wisdom in the ancient texts. Thank you very much. Honoring Dr. G. Bhaskaran with Rashtriya Gaurav Award by Chancellor Dr. Satyanarayan Chakraborty and Vice Chancellor Dr. Ramkrishna Shastri. Next, Professor H. Maheshappa. Short speech by Dr. G. Bhaskaran. It gives me great pleasure and proud to be here in this international conference on Oriental Heritage. I thank the organizers for being conferred me the Rashtriya Gaurav Award. I would like to invite the institute to organize their next conference at our place Tanjavur, the cultural capital of Tamil Nadu, for our next conference. I welcome you all and thank you all. Honoring Professor H. Maheshappa, Vice Chancellor, VT University, Karnataka. Next, Dr. R.K. Singh, Director and VC, Indian Veterinary Research Institute, Uttar Pradesh. Good afternoon, everybody. I think it gives me a great pleasure to participate in this wonderful program by the Oriental Academy. In fact, they are doing such a wonderful work recognizing the performers all over the country. In fact, on behalf of all my fellow friends and the Vice Chancellors, I extend my heartfelt thanks to the organizers, Chancellor, Vice Chancellor. I think now that the culture is at the crossroads,
So this Vedic science, even though there are a lot of technological developments happening in the country all over the world, but the Oriental science or the Vedic science is the future. I think we should inculcate such values in our youth so that we have a great future for our the younger generation. Thank you very much. Professor P.B. Sharma, Vice Chancellor, Amity University of Gurgaon, Haryana. Short speech by Professor P.B. Sharma. Next, Dr. Eng Punna Vaiko, Vice Chancellor, Bharat University, Chennai, Tamil Nadu. Honorable Chancellor Sir, Honorable Vice Chancellor Sir, distinguished delegates to this international conference, let me at the outset pay my homage and profound gratitude to the institution for giving me an opportunity to be here with you this morning. Ladies and gentlemen, as you know that the day is devoted to Adi Sankaracharya ji, and you all have heard what Dr. Mitra has said in the inaugural session, that this nation's education has been provided a turning point by Mr. Macaulay. And we all know the great suffering through which we all have undergone. And today we are in a position of opportunity to turn the tables to our favor and once again ensure that the great spiritual heritage of India is revived for a larger collective good of the humanity. We need to ensure that education is not just knowledge. Education is knowledge plus vyavahar plus your own character. And all these three together would form the trinity of the education of 21st century here in India. And I'm sure the Institute of Oriental Studies has a tremendous role to play. All my Vice Chancellor colleagues present here would submit to the cause of integrating spirituality in our pursuits for education to build the India of our dream. And if we do not do it, my friend, at this hour when the whole world recognizes the value and worth of India, then we would be, in fact, losing the gold mine of opportunity on which we are sitting here. With these words, ladies and gentlemen, may I express my profound gratitude to the organizer of this international conference and invite each one of you to seriously ponder over the action points that are required to revitalize India's education system to build the great nation of our dream, of which we have such a wonderful heritage. Thank you so much, ladies and gentlemen. Thank you. Professor Saket Kaswa, Vice Chancellor, Lalit Narayan Mithila University, Bihar. Professor Saket Kaswa, awarded with Rashtriya Gaurav Award. आदरणीय मंच से इतर बैठे सभी अतिथिगण, सभी प्रकाश पुंज, आप सभी को साकेत कुशवाहा का नमन प्रणाम. I feel really blessed person by receiving this award from the galaxy of these people. I also feel somehow that there's a loud echo from Indian masters, but somehow we are not able to connect our young minds with Indian heritage. I think there's a great responsibility lying on our shoulders that how our young mind could be connected with Indian heritage. I don't know, I might not be having a formula to tell people that there's a great need for us to remind our young youths that India has a rich heritage and culture, and it has a big science. All the time we are thinking that it is art, but I believe that Indian heritage has a big science, and there's a need for us to connect it. Once again, I will invite this conference, maybe upper year, next year there's an offer here, but upper year to be holding at Darbhanga, a seat of learning and land of Ma Janaki. Thank you very much for giving me this award. Thank you.
Professor Jogesh Chandra Dubey, Vice Chancellor, Jagat Guru Ramabhadracharya, Handicapped University, Uttar Pradesh. Next, Dr. Rameshwar S. Kanwar, Vice Chancellor, Lovely Professional University, Punjab. नमन करता हूं ऑल इंडिया ओरिएंटल हेरिटेज के माननीय कुलाधिपति जी को, माननीय कुलपति जी को, अध्यक्ष जी को और इस मंच पर विराजमान सभी सम्मानित सदस्यों, अतिथियों, विद्वान मनीषियों तथा इस सभागार में समुपस्थित विभिन्न भारतवर्ष के ही नहीं अपितु विभिन्न देशों के, विदेशों के सम्माननीय कुलपति और भारतवर्ष के विभिन्न अंचलों से पधारे हुए विद्वान मनीषी, आज 39वें इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में मैं अपने को राष्ट्रीय गौरव अवार्ड से सम्मानित होकर के धन्यता का अनुभव कर रहा हूं और मुझे सबसे ज़्यादा गौरव इस बात का है कि भारतवर्ष की जो प्राच्य परंपरा है, भारतवर्ष की जो प्राच्य धरोहर है, भारतीय संस्कृति, भारतीय प्राच्य विद्या और भारतीय मूल्य जिसके लिए भारतवर्ष विश्वगुरु के रूप में जाना जाता था, उन सारे मूल्यों, उन सारी धरोहरों, उन सारी संस्कृतियों, उन सारी सभ्यताओं को पुनर्जागृत करने के लिए पूरे वैश्विक परिदृश्य पर पुनर्जागरण हेतु जो ओरिएंटल हेरिटेज संस्था ने कार्य करना प्रारंभ किया है आज लगभग 40 वर्षों से, और पूरे वैश्विक क्षितिज पर जिस तरीके से अपनी इस भारतीय सभ्यता, संस्कृति और प्राच्य धरोहर को प्रसारित प्रकाशित करने का बीड़ा उठाया है, निस्संदेह यह न केवल भारतवर्ष के लिए अपितु विश्व के लिए गौरवास्पद है। मैं इस संस्था के प्रति अत्यंत ऋणी हूं। मैं ऋणी हूं इस संस्था के माननीय कुलाधिपति जी का, उनसे मेरा बहुत आत्मिक लगाव है। माननीय कुलाधिपति जी प्रोफेसर यशन चक्रवर्ती साहब हमारे विश्वविद्यालय के एक सम्मान्य व्यक्तित्व के रूप में हमारे विश्वविद्यालय परिसर में कभी पधारे थे। उनका स्नेह मुझे बहुत प्राप्त था। निस्संदेह ऐसे विद्वान मनीषी जिस संस्था के कुलाधिपति हैं, वह संस्था न केवल भारतवर्ष अपितु विश्व परिदृश्य में भविष्य में भी इसी तरीके से भारतीय संस्कृति, परंपरा और धरोहर को पुनर्जागृत, पुनर्प्रकाशित कर पुनः इस भारतवर्ष को विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठित करेगा। इन्हीं भावों के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं भावनाओं के साथ एक बार मैं पुनः इस संस्था को नमन कर रहा हूं और आप सबको नमन कर रहा हूं। जय श्री सीताराम। Next, Dr. R.S. Kanwar, Vice Chancellor, Lovely Professional University, Punjab. By the Chancellor, Vice Chancellor and Secretary of Indian Institute of Oriental Heritage. Next, Professor B. Pandey, short speech by Dr. R.S. Kanwar. Respected Chancellor, respected Vice Chancellor of Indian Institutes of Oriental Heritage. First of all, I want to thank them to recognize Lovely Professional University. In a very humble way, I'm accepting this award on behalf of the students, faculty and staff of Lovely Professional University. And also, I would like to add, although we are training our students to become successful in their careers, but at the same time, we got to introduce some of the humanity aspects in our curricula. So what we are doing at Lovely Professional University, we have set a goal in addition to preparing them for their successful careers, we also want to prepare them as good human beings as well as good citizens of this society. So I will encourage the organizers, especially the Indian Institute of Oriental Heritage, to help us developing a course which we can make as part of the curricula
for the business, for engineering, for sciences, for pharmaceutical or medical sciences. Thank you very much, and we would be to introduce those courses to make our students better human beings. Thank you. Professor B. Pandey, former Vice Chancellor, Jagatguru Ramabhadracharya Handicap University, Uttar Pradesh. Conferment of Rashtriya Gaurav Award to Professor B. Pandey. Now, short speech by Professor B. Pandey. अंतर्राष्ट्रीय इस विचार गोष्ठी में के मुख्य आयोजक और संस्था के माननीय कुलाधिपति सत्यनारायण चक्रवर्ती जी और इस संस्था के यशस्वी कुलपति डॉक्टर प्रोफेसर रामकृष्ण शास्त्री जी, समय कम मिला है, कम समय में कुछ कहना बड़ा कठिन होता है, लेकिन स्वामी विवेकानंद ने कहा शिकागो कॉन्फ्रेंस के बाद कि भारत के पास देने के लिए बहुत कुछ है, पाने के लिए बहुत कम। वह है भारत की प्राचीन धरोहर। अगर दुनिया से हमारा सौदा हो, हिसाब किताब हो, तो हमारे पास जो देने के लिए बहुत कुछ है, उस धरोहर की परंपरा को कायम रखते हुए प्रचारित प्रसारित करने का जो दायित्व इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ओरिएंटल हेरिटेज कर रहा है, यह कार्य अत्यंत श्लाघनीय, प्रशंसनीय। इस पुनीत वेला में सबसे पहले आयोजक मंडल के इस महनीय कार्य के प्रति इन्हें साधुवाद देता हूं, इनके कार्यों की प्रशंसा करता हूं। I must congratulate the Indian Institute of Oriental Heritage for organizing this seminar annually and getting opportunity to meet the intellectuals from the whole world. I also congratulate him for selecting a very suitable site. He has selected this year's site that we are staying and having this conference is so suitable for this type of discussion. I thank him. Well, friends, it is high time. It is very good that all of intellectuals have gathered here. We must think that what is our heritage, how to conserve it and make it known to all of us, to the younger generation also, so that they feel pride in our heritage. A massive campaign needs to be organized throughout the country and throughout the world, that what is Indian heritage, how it helps the man to improve and have a peaceful life. Thank you all. Best wishes. I will give my views in subsequent lectures in detail. Thank you. Honoring Professor Dr. Suresh Prasad Singh with Rashtriya Gaurav Award. Next, Dr. Uttam Kumar Panda, Chhattisgarh. Short speech by Professor Dr. Suresh Prasad Singh. Respected Professor Ramkrishna Shastri ji, the Vice Chancellor, the distinguished person sitting here on the dais, respected person sitting here before me, friends, really I am very happy to receive this award. Friends, I have been attending this conference for the last so many years. For the last 20 years, I must say, I was a Vice Chancellor also 20 years ago. Friends, my heartfelt thanks to Professor Ramkrishna Shastri ji and his team of this great institute, the Institute of Oriental Heritage, for remembering me and giving me this honor. Thank you very much. I'm really very happy and proud to receive this award from Indian Institute of Oriental Heritage, Kolkata.
I think I am the youngest one to receive this, and it is a kind of encouragement to work on the field of heritage. And also I'm a teacher, so that I can inculcate and imbibe the heritage qualities, Indian culture and values among my students. And also I'll try to make myself more cultural, Indian, and also I'll try to make my country proud for inculcating and imbibing such values in my students. Thank you, sir, giving me this opportunity. Thank you. Next, Dr. Rajesh Kumar Verma, Uttar Pradesh. A short speech by Dr. Sripal Sharma. लगातार सुन रहा था, देख रहा हूँ कि most of the persons came from spiritual field. Here, I am a scientific person, comes from the subject physics. Basically, physics ग्रीक वर्ड है, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन नेचर है. हमारे जो एक्सटीरियर एटमॉस्फेयर है, जिसमें हमारा ये फिजिकल बॉडी भी इंक्लूड होती है, उसकी स्टडी फिजिक्स है या साइंस है. जो हमारा इंटीरियर रियलाइजेशंस हैं, मैं कौन हूँ, इसकी स्टडी हमारे स्पिरिचुअल फील्ड में ही मिलती है. बेसिकली वेद, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र, इनको अगर हम मिला दें तो वो वेदांत हो जाता है. मैंने जब प्रोफेसर शास्त्री का इनविटेशन लेटर गया था, मैं इधर न्यूक्लियर फिजिक्स के माध्यम से, एटम के माध्यम से मैटर की जो सच्चाई है उसको स्टडी करते हुए हमने रियलाइज़ किया कि एटम स्वयं में निराकार है, एक इल्यूज़न है. जो हमें दिखता है वो एकदम सच नहीं है, जिसको हम बाद में, जो हमको स्पीच देने को दोबारा मिलेगी तब मैं इसके बारे में विस्तृत बताने की कोशिश कर पाएंगे. मैं साइंटिफिकली आपको अपने स्पीच में बाद में बताना चाहूँगा कि कैसे हम अपने आप को रियलाइज़ कर सकते हैं थ्रू वेद, उपनिषद और भागवत गीता. थैंक यू वेरी मच. मंच पर उपस्थित सभी जितने भी सम्मानित लोग हैं, सबको मैं नमन करता हूं, और साथ ही साथ जो बहुत से विद्वान लोग पूरे विश्व से आए हैं और अपने भारतवर्ष के कोने कोने से आए हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि वो यहाँ पे आए. और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ओरिएंटल हेरिटेज के शास्त्री जी ने मुझे यह सम्मान दिया, इसके लिए मैं उनका बहुत आभारी हूँ. हम अपनी पुरानी जो परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, जो हमारे धर्म है, उसको हम धीरे धीरे करके भूल रहे हैं. ये चीज़ बहुत गलत है, और हमको जो है समाज के साथ जो आधुनिकीकरण हो रहा है, नई परंपराएं आ रही हैं, उनको हम अपना रहे हैं. लेकिन जो पुरानी परंपराएं हैं, जो बहुत सारी सदियों से, पीढ़ियों से चली आ रही हैं, इनको कायम रखना भी बहुत ज़रूरी है. धर्म भी हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है, और अगर हम धर्म को और पुरानी परंपराओं को, रीति रिवाजों को भूल जाएंगे तो समाज में बहुत खराब वातावरण आएगा. और क्योंकि हम धर्म से हटते जा रहे हैं, पुरानी रीतियाँ भूलते जा रहे हैं, रीति रिवाज भूलते जा रहे हैं, और इसीलिए आप देखेंगे कि बहुत सारी सामाजिक बुराइयां आज आ रही हैं. तो इसलिए जो है इंस्टीट्यूट ऑफ ओरिएंटल हेरिटेज बहुत अच्छा काम कर रहा है. जो हमारे वेद हैं, उपनिषद हैं, धर्म है और आयुर्वेद है, योगा है, इन सारे के ऊपर ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. और मेरी इच्छा यही है कि ये समाज को एक बढ़िया नागरिक बनाए, और समाज में अच्छे से अच्छे नागरिकों को लेके देशभक्ति को ध्यान में रखते हुए
देश की सेवा में अर्पित करें, यही मेरा इनसे अनुरोध। Conferment of Lifetime Achievement Award to the eminent scholar of the globe, Mrs. Chaya Khanna, Dehradun, Uttar Pradesh. Lifetime Achievement Award awarded to Mrs. Chaya Khanna by the President of Indian Institute of Oriental Heritage. Short speech by Mrs. Chaya Khanna. Next, Jagdish Kumar Gehlot, New Delhi. Dignitaries on the stage, distinguished guests, ladies and gentlemen, I would like to express my heartfelt gratitude to the Indian Institute of Oriental Heritage for bestowing this prestigious lifetime award on me. I hope I shall do further justice to the honor given. I am particularly grateful to the organizers for giving me an experience which was very rare, yet so very beautiful. Thank you very much indeed. Dr. Jagdish Kumar Gehlot, New Delhi, awarded with Lifetime Achievement Award. Lifetime Achievement Award to Dr. Jagdish Kumar Gehlot, New Delhi. Now, short speech by Dr. Jagdish Kumar Gehlot. Honorable Chancellor and Vice Chancellor of Indian Institute of Oriental Heritage, dignitaries on the dais, ladies and gentlemen, I am very happy to be here with you, and I have learnt a lot. I am an engineer. I am a farmer since my culture has been agriculture, but I have learned today a lot about our Oriental heritage, our heritage. I think it has been a very enlightening session. I wish to thank the organizers for giving me this opportunity to inviting me here, and learning. The process of learning is continuous, and I am very happy to learn so many new things about our culture, our Oriental this and our heritage. With these few words, I thank the organizer once again. Thank you all. Conferment of Swami Vivekananda Award to Dr. Paul Valan, Arasu, Tamil Nadu. Short speech by Dr. Paul Valan, Arasu. Dignitaries on the dais and the participants of the conference, I am very grateful for the honor given to me. I will do the needful for the Oriental heritage forever. Let me say one proverb in Tamil. உட்கார்ந்து உண்டால் 9 தலைமுறைக்கு ஆகும். ஆம், தந்தை மகனை பெறுகிறார், மகன் பேரனை பெறுகிறார், தந்தையின் வழியில் வந்த பிள்ளையை மகன் என்றும். खास खुसूसी तौर से आज ये बड़ा हर्ष का एक लहजा सा है, सिर्फ इसलिए मेरा सूरज वेस्ट में मेरे बचपन से ही चढ़ता चला आया है. आज मैं अपने देश में शायद पहचाना जाने लगा हूँ, पर इसमें शक नहीं, इससे पहले मेरी लिस्टिंग बहुत लंबी रही है. पर सत्य तो सिर्फ यही है जो आप अपनी ज्ञानत से और नेक नीति से, मॉरल कैरेक्टर स्ट्रेंथ पर कुछ ओरिजिनल, जेन्युइन, रियल, क्रिएटिव थिंकिंग कर पाते हो, कभी निरर्थ जा नहीं सकती. एंड दिस इज द crux of the fact that has helped me lead the world right from my infancy. I am
really the global leader. I acknowledge personally so well. Thank you. And I feel proud. My nationality today dwells on the Orient and the Oriental heritage. But when I was an infant, the Orient and the Occident, that is the opposite of that, the so-called East and the West dichotomy, has been my point of address from my infancy. And whatever, therefore, has been read aloud to you is a product of my personal endeavor, unguided humanly, but superseded and succeedingly driven by the supernatural force. The Vedanta as, and what all that you have, your real faith and culture as an Indian, has been my basic tool of existence from day one. With gratitude to Almighty and thankfulness to the guys that now recognize this as a national endeavor, has been my enterprise as a humble hobby maker and a hobby killer. Thank you so much. A delight to be here with all of you today. Thank you so much. nahi jani maranam nasti punyam na papam no tatvam tattvamekam sahaja samarasam sadgurum tam namami. Samadharaniyaha asya samajasya Indian Institute of Oriental Heritage संस्थायाः पदाधिकारिणः सम्मुखे विराजमानाः विद्वद्वरेण्याः सदस्याश्च अहं किमपि अधिकं न वदिष्यामि. वयं तु भारतीयाः, तो भारतीयाः इति शब्देनैव ज्ञातुं शक्यते. तो भारती, भारत्याः इमे भारतीयाः. भारती नाम सरस्वती, संस्कृत भाषा. ब्राह्मी तो भारती भाषा, गीर्वाग्वाणी सरस्वती इति भारत्याः वयम् इति भारतीयाः. तो संस्कृत संबंधिनः वयमिति. एवमेव इंडियन, we know India, called India. Same way we called Bharata, the translation. So what is the connection of both words? In Bhagavad Gita, always Lord Krishna told to Arjuna, Hey Bharata, Hey Bharata. Bha means Jiva Brahma Ekya Jnane Rataha, Te Bharataha. So same way, in India, you can say India, I-N-D-I-A. I means aham. In any language, you say I means myself. I means aham. N means not. D means different. From I, other I, from individual soul. I am not different from individual soul. Why? Because A. A means A. A iti Brahma. A word is A means A. A iti Brahma is Rigveda mantram. So A iti Brahma tatmat agata iti aham. A ha. I will not ha. Militva aham bhavati. So tasmat brahmana vayam agataha ateva aham shabdena vayam uchyamaha. So Indian means I am not a difference from individual soul. We are all are Brahmans. Aham Brahmasmi. Sarvam Khalvidam Brahma. Ateva Bharatiyaha. India Shabda Danena. They gave India, India. So very happy because there is no difference meaning from us. So we accept India word because Bharata and India same meaning. So this knowledge will come before die. Only 4 questions we don't know. We must know before leaving the body. Shankaracharya told, Koham, who am I? Katam idam jatam, how this world was created. Who I kartasya vidyate, who is the cause of the world. Upadanam kimastiha, what is the material cause of this world, which I made this world. So these 4 questions, compulsory to know everybody. So all Shastras, all Vedic knowledges, giving answer these only 4 questions.
So when we know these 4 questions answers, we are really Indians. We know Bharat Sanskriti. Bharati means Sanskrit Bhasha. So vayam Bharatiya. Sanskritam avasyam kinchit avagantavyam jnatavyam. நடன மாடு மடகனிதன் நங்கைய நீ பாரடி நடன மாடு மடகனிதன் நீ பாரடி நடன மாடு மடகனி நங்கைய நீ பாரடி திக்கு தக்க திங்கிண்ண தொம் தச்சம் தக்கஜம் தக்கிட்ட ஜம் தி கதகதக தொம் தச்சம் தக்கஜம் தக்கிட்ட ஜம் கதகதக தொம் தக்கத ஜம் தக்கத நம் தக்கத ரம் தக்கத த தேதோ தேதோ கதகதக தொம் தேதோ தேதோ கதகதக திங்களுடன் கங்கையை செஞ்சடையில் சோடி திங்களுடன் கங்கையை செஞ்சடையில் சோடி திங்களுடன் கங்கையை செஞ்சடையில் சோடி திங்களுடன் கங்கையை செஞ்சடையில் சோடி. Namaste to everyone here today. I'm very honored to be present here in your 39th annual convention, and we hope to bring some new things for you, which are very old but very traditional. And I'd like to make the remark the fact that you have emphasized very much that we should try to keep tradition. We should recapture the old ways. And I have to emphasize that we have to be stronger in that sense. So thank you so much for the honor in having us here today. Now, speech by Ms. Kanchana Coimbatore, Sri Lanka. Chairman of the conference, VCs of universities, national and foreign scholars, and intellectuals. My greetings to all of you. Oriental heritage has evolved over the centuries and is the result of the wisdom of India's ancient sage. The supreme distinction of Oriental wisdom lies in its universal approach. The Oriental way of life has predominantly been regulated by spirituality, which is reflected through the observance of ritual and activities aimed at acquiring wisdom about the ultimate truth. This Adhyatmikata defines how life originates and also the various traits of mind. In today's perspective, Oriental learning faces big challenge from the so-called intellectuality advanced circles. Therefore, the acknowledged and sincere scholars of Oriental learning have the responsibility to upgrade their knowledge and skills and create a scientific confined system for it. Extensive research studies are urgently required to use in new era in all streams of Oriental heritage. To illuminate the path of mankind with the light of knowledge and to restore the glory of this branch of wisdom with a view of evolving scientific and methodological inquiry and popularizing these spheres of learning. In this, the Indian Institute of Oriental Heritage is and must continue play an important role. Over the past few decades, Oriental learning has evoked an active interest among the Western world. It has been acting as a lighthouse to the intellectuals of West lost in the great ocean of life and to whom creation of wealth has been
the central point of existence. Oriental learning is now a bond between East and West, and strengthen this bond are institutes like the Indian Institute of Oriental Heritage. I wish Institute every success in its future plans. My most best wishes to all the participants in this conference. I am confident that the glory of Oriental wisdom will be guide your way. Thank you. Dr. Jagdish Maheshwari, USA, the honoring with Tilakam floral garlanding wearing of Angavastra and badges. Namaste. This is a great privilege which I don't deserve at all. I remember, Dada, I think I met you at Torino airport in Italy long back. It has been more than 25 years. I was very, very young like you those days. I am very grateful to Institute of Heritage, which has honored me today with the kind recommendation and the kind hands of Vice Chancellor Professor Sastry. I can only tell you 2-3 words here that this is the age of Orient. This is the time of Prachya Vidya. I say that we are having facilities to know each other. We have not known each other so far. So I recommend that when in future Cultural Heritage is organizing some program, you have to have a dialogue between South Asian and Southeast Asian countries. As president of that UNESCO association also, which is another job which I handle, I recommend that people of Korean Oriental Heritage should join with us together and organize programs in various countries. Take heritage not from Kolkata to Delhi, cross the border also. Thank you so much for this honor. I am very personally grateful to all of you. Now, speech by Dr. Jagdish Maheshwari, USA. Good afternoon to everybody. I got an email from Dr. Sastry. As a result of our communications, next thing I know, I'm here. And I'll be talking on a couple of things in the next 2 days. And hopefully I will share my experience. This is a great honor to be here. Now, speech by Mrs. Nongia Kupala, Italy. So many thanks to Dr. Ramakrishna for the invitation. So many thanks first and everything to India, to Mahabharata, to this lovely, powerful, incredible place, which is always in my heart, which is in my body, which is in my cells, in my mind, in my blood. Because in this life, I was born in Italy, but in my previous lives, in many previous lives, I was Indian. So I feel Indian and I am Indian. So many thanks. Thanks. Mr. Digambar, son of Nongia Chopala from Italy. Namaskar. Thank you. Mrs. Patriazia Nova from Italy. Well, the speech is totally unexpected to me, so I'm not prepared to give a long speech. I just want to say what I feel. I'm very, very happy to be here. I'm so proud, so grateful to you all of this invitation. And I'm particularly happy because I am a Western astrologer, totally Western. I mean, I don't know much of your kind of astrology, so I think it has been such a positive connection, this invitation. I'm very happy to be here again to make this connection alive between two different words, two different cultures, and different but similar kinds of astrology. Thank you very much. Mr. Emidio Liza from Italy. I am very happy to be here. I am not astrologer, but I like so much travel. So I think India is one of the best
country in the world. So I am very happy to be here. I am very grateful to accompany my wife, and I think we come back as soon as possible. Thank you very much. By Dr. Lokraj Podel, Nepal. प्राध्यापक रामकृष्ण शास्त्री जी, नेपाल और नेपाल के पूर्वीय दर्शन अनुरागियों की तरफ से सर्वप्रथम इस सम्मेलन का सफलता के लिए मैं शुभकामना करता हूं और ये पूर्वीय दर्शन सम्मेलन हम लोग सब एक जगह एकत्रित होकर के जो हमारी प्राच्य विद्याओं का आदान प्रदान का एक मंच जो बना हुआ है, इसको निरंतर आगे ले जाने के लिए मैं सभी से निवेदन करते हुए अभी के लिए मैं विदा लेता हूं और पीछे मैं जो टेक्निकल सत्र में कुछ अपने मंतव्य रहूँगा। धन्यवाद। श्री हरि ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। I am coming from Karnataka, from Srirangapatna, but I am very happy today to participate in this function. The only one thing, I pray the God to give most energy to Sri Ramasriji and all other friends to do like this for many, many years and for many, many people. Because the government is now not going to identify the persons who are serving for the nation, but they are going to do their own thing. But these types of oriental institutions will go and identify each and every person, and they are going to do something for the nation. I am happy to participate in this person. Thank you. I am Professor Dr. Divagaran from Cochin. You know, I am the man who predicted tsunami in 2004 and 2013, 14, 15, 16. My predictions are come true. You know, this year 2 + 1 + 6 is equal to 9. That is March. So after 9th of March, there will be an earthquake in North India and Nepal, Tibet, Indonesia, Philippines, etc. will have to suffer, and this year will be more complicated to the politicians. Thank you very much. Professor Dr. Ram Silai Dwivedi and Professor Devendra Mishra from Lal Bahadur Shastri Kendriya Vidyapit University. अत्र सर्वेषाम् अभिनंदनम्। अहम देवेंद्र मिश्रः श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठस्य वेद विभागे सहायकाचार्योऽस्मि। विश्वस्यास्य मायामयो व्यामोहो दुरन्तः सर्वो हि लोकः मृगमरीच कामय पद प्रतिष्ठाधिकारीश्वर्यानुगामी केवलमशान्तिमूलकानां दुरितानां मेव संग्रहासक्तो दृश्यते। यत्र तत्र आकाशे परिभ्रमतां पक्षिणां यथा भूमिरेव विश्रामस्थानं तथैव नानायोनिषु परिभ्रमतां अज्ञानिनां जीवानां केवलं करुणावरुणालयो भगवान् एव विश्रामस्थानं। ततो दुरभ्यस्त जीवस्य सितारस्तुल्यो ब्रह्मसुखानुभूतिपन्थाः निम्बकीटकस्योद्वेजकः प्रतीयते। अतो अस्य प्रज्ञा सदैव विचलितैवास्ते। उक्तं हि गीतायां तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिमां भसि। बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद देता हूँ डॉक्टर रामकृष्ण शास्त्री जी और डॉक्टर सत्यनारायण चक्रवर्ती, डॉक्टर गोपाल शास्त्री, डॉक्टर अमर कृष्ण शास्त्री जी। 39th एनुअल जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन ओरिएंटल हेरिटेज के ऊपर ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, सबको जोड़ने का। भारतीय प्राच्य जो संस्कृति उसका विस्तार करने में ये संस्था भारत के लिए बहुत बड़ी संस्था हम समझते हैं। सबको सबसे बड़ा एक परिचय इनका है जो ये सिर्फ संस्कृति को नहीं जोड़ रहे हैं, ये जोड़ रहे हैं सब जात पात धर्म को लेके। आज जो इतनी हिंसा हो रही है उसको भी जोड़ते हैं। बंगाल में एक वर्ल्ड ब्रदरहुड मार्च होता है, उसके ये प्रेसिडेंट डॉक्टर रामकृष्ण शास्त्री हैं
और उसके कन्वेनर मैं हूँ और वहाँ पर ये संस्था को ये चलाने का काम कराते हैं हमारे गुरुदेव भवा बागला के आदर्श से। मैं छुई हूँ, छोटा साधु, छुई में सबको परोता हूँ, इनको सबको जोड़ता हूँ, तो यही काम करते हैं। इसके लिए इन लोग को बहुत धन्यवाद। विश्व शांति पुरस्कार to Dr. Gopal Khetri for his outstanding contribution in the field of world peace. Conferment of award to Raj Jyotishi Sri Animesh Shastri, Kolkata. Now, Srimati Ayesha Sultana. पर्वेन्दु सोदरि सुपर्व गणाभिरक्षे दुर्वारशोकमय भक्त गणावनेष्टे लक्ष्मी त्वदीय चरणौ शरणं प्रपद्ये। स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय। आया शरण में आसिए मन में, आया शरण में आसिए मन में, चरण कमल सब अर्पण की मुझे लागी लगन दर्शन की, मुझे लागी लगन दर्शन की, मुझे लागी लगन दर्शन की। हरि ओम 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 हरि ओम। Now, the first lecture will be delivered by Mrs. Nunjia Kupala from Italy. And my gratefulness to Professor Ramakrishna Shastri, to Indian Institute of Oriental Heritage, and to Vishwa Jyotisha Vidyapith. Thanks you to all for accompanying me into the dimension of Nityas. May the Heavenly Mother Katayani shine her beneficial rays upon us all. May this annual assembly play a pivotal role in the practice of cross-cultural astrological exchange. Let's start. When you go inside, because each avarana, the circuit, shows secret parts of ourselves.
In a digital language, in a modern language, electronic language, we could say that at each Avarana, we get back a selfie of our sub-personality seen towards a very outside scale. So we can be afraid to meet ourselves so strongly, so vivid, and so real. Please, before going in the 9 Avarana, please close your eyes and do a very, very short meditation. Please close your eyes. Breathe slowly. Gaze with your inner eyes the Sri Jantra. Visualize your body, your own body. Visualize Mother Earth. Visualize the moon. Visualize the boundaries which separate terrestrial space from celestial space. Visualize the entrance of the cosmic dimension. Gaze it with your heart. Allow its light to transform you. Enjoy it, the mother light. Then you can open your eyes. And we start with the first Avarana. The first Avarana, Trilokya Mohan Chakra, is the Avaran which enchants the 3 worlds. It's made with the 3 linear squares and 3 circles of the cosmic belt. This is the place of Ketu. The Mesis includes esoteric knowledge, charisma, and intelligence, according on the kind of rapport you will establish with your guardians, with the Lokapala. Here there is the need of the detachment. So what is the teaching of the first Avarana? No manipulation if you want to proceed ahead. If you want to proceed ahead, you don't have to manipulate people and you don't have to manipulate yourself. Second Avarana is the chakra who satisfies all lobes with the 16 petals. Is the place of Venus. Venus, the need for affection. So you can understand about yourself what are your unfulfilled desires, what creates blocks inside yourself. You can fulfill your desire, but you can also get imprisoned by your desire. So what is the teaching of the second Avarana? Is fulfill your desire, but make sure they do not harm other people. The third Avarana, chakra which stirs up everything, the 8 petals. This is the place of sun. It is associated with shape, taste, smell, contact, rhythm, sound, nature, and conscience. In this dimension, you can understand your potential for moving forward. Here, you can understand if you possess the necessary balance to follow your karmic project. It's the need for self-esteem. And the teaching is follow your path and make sure you are detached from the fruits of your action, Nishkam Karma. The fourth Avarana is the chakra provider of prosperity and mental awareness with the 14 triangles. This is the place of the moon. Here you can find the alphabet and the following energies: mental, intellect, conscience, ego, the 10 organs of awareness, and action. Gyanendriyo and Karmendriyo. Here we understand our mental image of material well-being is the need for mindfulness. The moon teaches us mindfulness. So feel and think with compassion. This is the first step towards empathy. When you acquire this dimension, when you go
inside this dimension, then the real empathy, the spiritual empathy, will start with a very good rhythm. And here you can start to understand what is your real nature and what is the real nature of the people coming to you. Our next speaker is Mr. David Hernandez from USA. As astrologers, we're always looking for new ways of improving our income. And one area that we've gone into is legal astrology. There's always someone in court, someone who needs some counseling. And who better than to go to an astrologer and see them to find out whether or not they will win the case. So the presentation today has to do with the inception of legal matters. Can astrology determine who will win a case? Well, from ancient times, we've always used astrology in that sense. And there's one particular person that wrote about it was Hephaestus of Thebes. Okay, and unfortunately we can't see, but there's a book out recently translated by Dr. Benjamin Dykes on Hephaestus, which speaks about just legal issues. Thebes was born in Thebes, Egypt. He was a Hellenistic astrologer back in the 380 CE. His sources were Dorotheus of Cedius and Claudius Ptolemy, and he deals more with elections and orrery. Robert Schmidt was the first to translate book number 1 and number 2, and recently Benjamin Dykes did the translation. Now, when we look at a legal case in particular, we want to look at the planets rising, the sun, and if it's in its 12 degrees from other planets, when the planet sun is setting, when it is closer to 7 degrees, the other planets, when they're 7 degrees, are weaker. The tropical signs tend to change things quite rapidly when they're in the ascendant. The fixed signs make the matter sought unalterable. Things won't change when we see fixed signs in the ascendant. And bicorporal signs make the result of the matter sought to changes. The nodes of the moon, as you know, will increase or decrease the matter at hand. And obviously the connection with the moon, whether it's waxing or waning, will also determine the results of a legal case. The lot of fortune also takes place, very importantly, in legal issues. We could also foreknow the results of the inception by looking at the lot of fortune. When the third sign of the ascendant and the lord of the sign opposes it, hatred and disagreement will come about by their friends. The ascendant will always go to the accuser, the 10th sign will go to the judge, and the 7th sign will go to the accused. The 4th sign has to do with the results of the legal issue. If you find the hour maker, the ascendant, in a tropical sign, the matter will not come to an end. A bicorporal sign, the one accused will change his mind. A fixed sign or solid sign will see delays in the court case. And when Mars is playing a strong issue in the chart, it shows a person who will be insolent, bold, and relentless in his pursuit. Saturn always shows us a man who's crafty, of old age. Mercury has to do with payment and forgery. And when we look at the benefic planets, the judge will handle the matter with justice if there's benefic planets in the 10th sign. If we find malefics in the 10th sign, then the judgment will not be honorable. In a tropical sign in the 10th house, the judge or the arbitrator will not be consistent in his judgment. And if the sun or the moon are placed in the 10th sign, they will be honorable and held in high esteem. If harmed by a malefic, the judges will defer and will not come to agreement amongst themselves, the judgment being put off. If they come to an agreement amongst themselves, the judgment will be unreliable. Saturn in the mid-sky, or in the 10th house, produce unjust judgment. Benefics in the mid-sky produce righteous judgment. I forget the name now in English. Fiscal. The government's lawyer were combined together, and it would look like the accuser would lose the case. But that wasn't what happened.
I had told him that because Mars was peregrinating in the 10th house, separating from Venus, who was also there, that the judge would finally look at him more favorably. Okay? And there were 14 hearings that took place. I saw all 14 cases, one by one. And by using these techniques, we were able to determine beforehand each and every one of the results of that particular case for each and every hearing. Not only that, we were able to talk about the witness that the government would bring in to make their case even stronger. And it so happened that every time we looked at the chart, those witnesses would speak more in favorable of the accuser to the accuser than they would about negatively. So during it was close to 4-month period that we were looking at each single case, lawyers who were involved, and he had, I believe it was 5 lawyers that he had contracted. They were looking at $1 million suit, the government against this person. We were able to determine the reaction of the judge and their witnesses and the final result of the case. So astrology does help strongly when we use it correctly and when we keep the tradition. In my case, as you already heard, I do not use Uranus, Neptune, or Pluto. I keep only to the 7 stars. And there's no need to use anything else because everything is shown by the chart and the planets as they lay without having to go into other planets that the modern area tends to use. So again, I apologize for not being able to show you the chart. But if anybody needs the presentation, I'll be more than happy. If they want to give me their email, I'll be more than happy to send it over to you. Okay? Thank you so much, and have a great day. Tizian Niva from Italy. As I said yesterday, I'm a Western astrologer, so the kind of astrology I practice is a bit different. But I think it could be interesting as well to speak of this. I would like today to speak of the metaphor of the throne and the footstool in traditional Western astrology. The first, William Lilly is celebrated as the most illustrious English astrologer of all times. His main work, Christian Astrology, was published in 1647. His almanacs and astrological pamphlets were real bestsellers at the time. His interest in contemporary history, current events, together with his evident sympathies for the Roundheads, that is, the parliamentary faction, as opposed to the royalists, that is, the faction of the king, in an age of civil wars, led him to try to foresee the victory or defeat of the representatives of the opposite sides, thanks to horary questions that are clearly political and even propagandistic in nature. Lilly's fame peaked during Cromwell's protectorate, but since the beginning of the First English Civil War, which broke out in August 1642, examples of horary questions about battles, sieges, the adventures of princes, generals, commanders, had become frequent enough in his works. Lilly was then in London, seat of the Parliament and center of all anti-monarchic sentiments, and King Charles I had been compelled to flee and to move his court and military headquarters to the nearby city of Oxford. In the spring of 1643, when the royalist army was predominant, rumors spread of a possible siege and fall of the city of Cambridge, up to then controlled by the parliamentary faction. So a gentleman who was supporter of Parliament like Lilly asked William Lilly if the rumors were true. This is the original square chart for the question, calculated for London the 11th of April 1643, but a modern approximation would be the 21st of April 1643 in Gregorian calendar, at about 1628. I reported the original judgment by William Lilly. First of all, the astrologer tries to examine the chart to check whether it shows signs of solidity, reliability,
and truthfulness, because he wants to answer the main question, and the main question is, are these rumors true or not? But there is no evidence of a true report, because the angles of the chart are all in cardinal and not in fixed signs, as they should be, and they are also afflicted by the malefic planets Mars and Saturn. Even the moon is only peregrine, that means that it is devoid of any essential dignity and in a cadent house. So the report is clearly false. But Lilly is not easily satisfied with this easy answer, because he is himself a supporter of Parliament, so he wants to make sure that the city of Cambridge will never fall in the hands of the king. He's eager to ascertain which of the two factions that were will be winning, and is deeply involved in the question as much as his querent is. As a rule, the ascendant and its ruler signify the querent, his faction and his party in any horary question. Thus, in this chart, the Libra, tropical Libra of course, ascendant, and its ruler, Venus, are attributed to the forces of Parliament, while the ruler of the opposing house, Mars, is given to the king and his army. So it is a question of first house against seventh house, we, the Parliament, against our enemies, the king. And it is here that the North Node, that is the celestial footstool, comes into play, because it is conjunct the cusp of the first house that represents Parliament, so it strengthens, exalts, and reinforces the anti-monarchic party. It is a sign of success and power, as precious as unexpected, considering the events of that year that seem to point instead at a possible victory of the king. But Lilly is not easily influenced by the first batters. He is aware that the celestial footstool is able to offer the Roundheads a metaphorical support on which to climb upon, to reach an elevated position from which they can dominate the adversary. And since the lunar nodes are obviously always opposed to each other for astronomical reasons, the diminishing, demeaning, lowering, and unfortunate south node must be at the same time on the seventh cusp, representing the king's forces. So while the Republican cause is gaining credit and popularity, the king's army is about to fall down into the pit, graphically represented by the glyph of the south node. Mars, that is the ruler of the seventh house and significator of the king, of the royalists, seems to be in a strong position because it is high in the sky, conjunct the MC. And indeed, the king seemed to be winning the first rounds of the conflict. But actually, it has just entered its sign of fall, that is tropical Cancer. And this is a serious debility that will soon show its harmful effects, not to speak of the square inflicted by Saturn. So that is a good chance for the parliamentary forces. But to exploit the fortunate occasion to the utmost, essential dignity is needed as well. And Venus, the Parliament and its supporters, is actually in tropical Pisces. That means that Venus is in exaltation. And if we apply to this day chart the scheme of essential dignities generally in use in ancient times, that is Dorotheus I, we will see that Venus is not only exalted, it is also in its own triplicity. So with multiple essential dignities, Venus is in her throne. And the combination of a throne for Venus and the footstool, the cusp of the first house on the north node, is a powerful sign of superiority and fortune, which allows Lilly to decree the victory of the Republican army. Now, every detail in the chart appears consistent, because the moon is translating the light of benefic Jupiter to Venus, while the square between Mars and Saturn reveals divisions, strife, and treachery among the royalist ranks. Lilly can now reassure both his querent and himself
that Cambridge has not been taken by the king yet, and what's more, will never be taken. And so it proved. Thank you very much. Speaker is Dr. Jagdish Maheshwari from USA. Okay, so the next one is, so this is fine. Now, when you look at this particular chart, and if you look at what like, at least to me, I don't see this chart of a person who ruled the world for 8 years. I mean, not ruled the world, but he was the world leader of the greatest nation on the earth. And I fail to see, just by looking at this chart and applying all the principles of astrology, I mean, it's a great chart. I can see that the Jupiter moon, which is the Gaj-Kesari Yoga, the Mercury moon, the mutual reception, which is Parivartan Yoga, and so on and so forth. And the important thing is the Jupiter makes trine with Uranus and Rahu in the 11th house, so is the moon. So you have 5 trines right there. So that is great. But if I look at the 10th house ruler Mars in the second, oh, no, I mean, it's not well placed, in my opinion, for someone to lead the nation like United States. So where is it? And so this is where I find the concept of 9. So you just cannot look at the natal chart and confirm the things that you want to that you have already interpreted from that chart. If you had looked at the ninefold chart, which is the noumost chart of this chart, you will find which is this chart. This is the noumost chart of the President George W. Bush. So what do you see the difference? See, in the 10th house, Uranus, Mars, Rahu, Saturn, and Moon. These are, and Jupiter. Take the Jupiter out, because Jupiter, in my opinion, is not a political planet, but the most important, all planets are in the 10th house. So you see how they converge there in the 10th house. So when you look at that, something like this, it strikes out. That's the reason. You cannot judge that. You cannot really see that in the natal chart. And that's the reason, you have to combine both charts, ninefold and the regular, which is the natal chart. And so the way you go around is, like, for example, say Jupiter is in the 5th house of natal chart. And then you say, wow, great. Great education, creativity, children, from that perspective is great. But if the same Jupiter in the ninefold chart or in the noumost chart falls in the 6th or 8th house, that power gets halved, 50%. It's not 100% anymore. The same way, conversely, if say Jupiter is in the 6th house in the natal chart, but it seems to occupy the, say, 4th house, it's not bad. It just goes up to 50%. So that is the difference. So you do that for each planet, and see each planet you come up with. That's what I call assessing the strength of planet by looking at the both charts, the natal chart, which is the birth chart, and its corresponding noumost chart. And you look at and you get the accumulated results. On the top of that, of course, you apply usual things like aspects, angles, yoga karaka planets, and that's a great thing, traditional. But you combine this with this, then you get a better perspective. Now, going back to the first, the natal chart, if you had Saturn in the 1st house, which is the difference is, in the 1st house, Mercury and Pluto, they are near the cusp of the 1st house. They're extremely powerful. On the top of that, Mercury exchanges house with the moon, the sign with the moon. So that's Parivartan Yoga, and Mercury being in the cusp, it's very powerful. Now, the Saturn being the ruler of the 7th and the 8th house,
If it were on the first house, I just don't see how one can excel in the life. But if once it goes in the 8th house, I mean the 12th house, 8th house ruler in the 12th house is great because it makes a trine by itself. And so from that, you can see that why the Placidus systems here works better than the whole house system. Now, Ganapati Prarthana by Dr. Suresh V. Bangalore. ವಿಚಾರಧಾರೆಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಧಾರೆಯಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸುಲಭವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಪರಾಶರರ ಅನುಯಾಯಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಂತ್ರೇಶ್ವರ ಫಲದೀಪಿಕ. ಈ ಮಂತ್ರೇಶ್ವರ ಫಲದೀಪಿಕದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಫಲವನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಮಂತ್ರೇಶ್ವರದ ಫಲದೀಪಿಕದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದಾಗೆ 12 ಭಾವಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ 12 ಭಾವಗಳಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ, ದ ಮೆಡಿಕಲ್ ಆಸ್ಟ್ರಾಲಜಿ ಅನ್ನೋದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು. ಅದರಲ್ಲಿ 5th ಹೌಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಭಾವ, ಭಾವಾಧಿಪತಿ, ಭಾವಕಾರಕ. ಭಾವ ಜನರಲ್, ಭಾವಾಧಿಪತಿ ಜನರಲ್, ಆದರೆ ಭಾವಕಾರಕ ಈ ಭಾವಕಾರಕನೇ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಅಂತ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಈವೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಆ ಈವೆಂಟ್ ಯಾಕಾಗಿಲ್ಲ, ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಗಿಲ್ಲ, ಏನು ತೊಂದರೆ, ಏನು ಫಾಲ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಭಾವಕಾರಕ. ದ ಭಾವಕಾರಕ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಭಾವ ಭಾವಾಧಿಪತಿ ಜನರಲ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್. Next speaker, Dr. Sripal Sharma. This scientific world and Indian philosophy. Basically, मैंने, आपने, सभी ने इस जीवन की शुरुआत बचपन से की है. इस वर्ल्ड को देखना शुरू किया है. जब हम छोटे होते हैं तो हमारे अपने बड़े हमको सिखाते हैं, बेटा ये क्या नोज़, ये क्या आईज़, ये क्या ईयर्स. जो 5 सेंसेस हैं उनको बाय नेम इंट्रोड्यूस कराते हैं. उसके बाद जो हमारी जो सेंसेस हैं, जिनको ज्ञानेंद्रियां कहते हैं, उन्हीं के माध्यम से इस वर्ल्ड को देखना हम शुरू करते हैं, समझना शुरू करते हैं. मैक्रो लेवल पे डिफरेंट फॉर्म्स में डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को हम देखते हैं. जो भी एग्जिस्टिंग है उसको देखने की इच्छा के साथ ज्ञान अर्जित करते चले जाते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं. लेकिन जब हम इसको और अच्छा समझना शुरू करते हैं, तो जब हम इसको और अच्छे से समझना शुरू करते हैं तो ये जानते हैं कि विदाउट लाइट वी कैन नॉट सी. लाइट क्या है? बिना कानों के हम सुन नहीं सकते, और कानों के पास क्या ऐसा आता है कि हमको सुनाई देने लगता है. मैं बहुत बेसिक से शुरू कर रहा हूँ ताकि हम लोग मेंटली प्रिपेयर हो सकें और चीज़ों को जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ उनको अपने आपके सामने रख सकूँ. तो जो हमारी भौतिक ज्ञानेंद्रियाँ हैं हमारे इस शरीर से जुड़ी हुई,
उन्हीं के माध्यम से हम स्टडी करते हैं। हमारी जो इंद्रियां हैं वो ये हैं, स्किन, नोज, टंग, ईयर, आई, और उनके जो सेंसेस हैं वो लिखे हुए हैं, क्या हम डिटेक्ट करते हैं वो सब लिखे हुए हैं। ये बेस लेवल पे, बच्चों के लेवल पे हमने ये चीज़ आपके सामने रखी है। मैंने बेसिकली फिज़िक्स सब्जेक्ट को पढ़ा है, फिज़िक्स सब्जेक्ट के माध्यम से इस वर्ल्ड को डिटेक्ट देखा है, और कुछ ऐसे भी अनजाने और जाने फैक्ट्स हैं जिनको हमने पढ़ा है थ्योरीज और लॉज के माध्यम से। क्लास 1 से स्टार्ट हुआ है, एमएससी किया, पीएचडी किया, बहुत सारे रिसर्च पेपर्स पब्लिश करे, जो हमारे विज़न में, दर्शन में जो आता गया उसके हिसाब से इस पदार्थ जगत या मटेरियल साइंस के अंदर छिपी घटनाओं को हमने प्लैनेट्स को दिखाया है। इसके बाद हम अर्थ पे आ गए हैं। बेसिकली मैं ये सोचता रहा कि आखिरकार ये एटम दिखाई देता है जिसके बहुत सारा जो ग्रुप बन के एक पार्टिकल बनता है, माने कुछ एटम्स मिला के एक मॉलिक्यूल बनता है, और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिला के एक ग्रेन बनता है, पार्टिकल बनता है, और बहुत सारे पार्टिकल्स मिलके एक छोटा सा मटेरियल का पीस बनता है। सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा के रूप में मैटर एग्जिस्ट करता है। बेसिकली जो एटम का साइज डिटेक्ट करके हम लोग जानते हैं वो 10⁻⁻10 मीटर डायमेंशनली बताया जाता है। 10⁻⁻10 मीटर को हम 10⁻7 सेंटीमीटर कह सकते हैं, 10⁻7 मिलीमीटर कह सकते हैं। सभी ने 6 इंच वाली स्केल या कभी भी स्केल तो देखी ही होगी कि 1 मिलीमीटर कितना छोटा होता है, ये हम रियलाइज करवाना चाहते हैं। 1 मिलीमीटर का जो 1/10 पार्ट है वो आपको समझ में आ रहा होगा कि कितना छोटा होता है। 1/10 ऑफ मिलीमीटर इक्वल टू 10⁻⁻1 मिलीमीटर। अगर आप उसको 100 पार्ट में बांटेंगे 1 मिलीमीटर को, तो वो 10⁻⁻2 मिलीमीटर होता है। इसको और फर्दर डिवाइड करेंगे तो वो 10⁻3 मिलीमीटर होगा, 10⁻4 मिलीमीटर, 10⁻6 मिलीमीटर एंड 10⁻7 मिलीमीटर। ऐसी कोई डिवाइस नहीं बनी है कि हम एटम को हूबहू एज सच देख पाएं। किसी ने नहीं देखा, किसी साइंटिस्ट ने नहीं देखा, क्योंकि ये हमारी कुछ फिजिकल लिमिटेशंस हैं जो हमें आइज दी हैं परब्रह्म परमेश्वर ने। इन आइज को देखने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो विजिबल रेंज में आती हैं, जिसकी वेवलेंथ रेंज होती है 4000 एंगस्ट्रम टू 7800 एंगस्ट्रम, उसी विजिबल रेंज में आने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की हेल्प से ही हम देख पाते हैं। विदाउट लाइट इन दिस वेवलेंथ रेंज वी कैन नॉट सी। और ये भी एक फैक्ट जो साइंटिफिकली आया है सामने, वो ये आया है कि जो वेवलेंथ है मिनिमम 4000 एंगस्ट्रम, उसका आधा साइज यानी 2000 एंगस्ट्रम साइज की वस्तु को ही हम आंखों से देख सकते हैं। बिना यंत्र की मदद के तो हम देख ही नहीं सकते। यंत्र जो आप माइक्रोस्कोप बना के उसके हेल्प से देखेंगे तब 2000 एंगस्ट्रम यूनिट वाले ऑब्जेक्ट जो डायमेंशन होगा उस तक को देख सकते हैं। यानी कि एटम के डायमेंशन के 2000 टाइम्स ही हम माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं। ये हमारी प्रॉब्लम है। अब इसको देखने के लिए साइंटिस्ट ने और दूसरे जो एडवांस डिवाइसेस हैं, माइक्रोस्कोप्स हैं, एग्जाम्पल के तौर पे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, टनलिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप, जिनकी हेल्प से ये जो नैनो और ये साइज के बारे में जो डिटेक्शन, सिर्फ डिटेक्शन होता है, ना कि विजुअलाइजेशन होता है।
और उसके बाद भी जो भी टेक्निक यूज़ करते हैं जिनके माध्यम से हम डिफरेंट जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनको रियलाइज करते हैं, इंट्यूशन में आता है, तब जाके कहीं कोई साइंटिस्ट मॉडल बनाता है, और जब वो मॉडल बनता है सबके सामने रखते हैं, जो थ्योरीज बनती हैं उनको सबके सामने रखा जाता है, डिस्कशन होता है, उन्हीं थ्योरीज को यूज़ करते हुए हम लोग किसी भी ब्रांच में फर्दर इन्वेस्टिगेशन करते हुए जो रिसर्चेस चलती हैं डिफरेंट ब्रांचेस में, वो हम लोग करते चले जाते हैं। एक बात और आपके परमिशन से कहना चाहता हूं कि एटम का साइज तो मैंने कहा कि 1 एंगस्ट्रॉम होता है, लेकिन जिसकी वजह से इस पृथ्वी में भार है, द्रव्य है, द्रव्यमान है, वो ड्यू टू न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस की तुलना में एटम 100,000 टाइम्स बड़ा होता है। उस न्यूक्लियस को तो हम देख ही नहीं सकते, एनी हाउ नहीं देख पाते। और उस न्यूक्लियस में जब हम न्यूक्लियस के बारे में जो स्टडीज़ हुई हैं, जो लगातार हो रही हैं, एडवांसमेंट हो रहा है। देखिए 2013 में जो नोबेल प्राइज़ हिग्स बोसॉन के पे मिला है वो इसी फील्ड से मिला है। 2015 में न्यूट्रिनोज के बारे में जो नोबेल प्राइज़ मिला है वो भी इसी फील्ड पे मिला है, उनके स्पेशल बिहेवियर की वजह से। और ये कहा जाता है कि हिग्स बोसॉन मास का कारण हो सकता है। ये अति उत्साह में लोगों ने उसको गॉड पार्टिकल भी कहा हिग्स बोसॉन को। इसके अलावा जो न्यूट्रॉन्स हैं उनकी ऐसी प्रॉपर्टी है जो आज तक किसी पार्टिकल की प्रॉपर्टी नहीं बताई गई है। तो उसकी जो डेंसिटी होती है न्यूक्लियस की वो 10⁻11 किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब ये हमारी उंगली का इतना छोटा सा पीस अगर हम देखें तो ये 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है। इसका वजन 10⁻11 किलोग्राम, माने बहुत सारे ट्रक उसको, एक ट्रेन खींच पाएगी मुश्किल से इतने बड़े पीस को। इतना डेंस न्यूक्लियस है। उस न्यूक्लियस पे जो रिसर्चेस हो रही हैं जिसके द्वारा हिग्स बोसॉन या न्यूट्रिनोज के बारे में जो इंटरप्रिटेशंस दिए जा रहे हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, बहुत सारा इंटरनेशनल लेवल पर मनी इन्वॉल्व हो रहा है डिटेक्शन के लिए, ये सब इसमें है। तो मैं थोड़ा सा इस साइंटिफिक वर्ल्ड के बारे में, जो बेसिकली हमारा जो फ़ॉन्ट था वो इस कंप्यूटर में नहीं मिला, तो मैं आगे की स्लाइड आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि वो प्रॉपर उसमें पढ़ने वाले स्वरूप में नहीं है। तो मैं थोड़ा सा समरी के रूप में बताता हूँ आपको। थोड़ा सा हमने मेंटली प्रिपेयर कराया है कि न्यूक्लियस कितना छोटा है देखा नहीं जा सकता, मॉडल के थ्रू ही बताया जा सकता है। और लेकिन सच्चाई ये है कि जब हम और डेप्थ में जाते हैं तो मुझे ऐसा आभास होता है कि न तो इलेक्ट्रॉन है, न प्रोटॉन है, न न्यूट्रॉन है। ये सब नियमों के तहत, जैसा कि गीता में वर्णित है कि हमारी प्रकृति 2 में विभाजित है, 2 प्रकार में विभाजित है, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष, जड़ और चेतन। जो जड़ है वो भी भगवान का ही स्वरूप है, परब्रह्म परमेश्वर का ही स्वरूप है। और जो अक्षर पुरुष है, जो चेतन के रूप में हम हैं, वो भी भगवान का स्वरूप है। तो जो हम लोग साइंटिफिक वर्ल्ड को डिफाइन करते हैं, जिसमें हम लगातार लगे हुए हैं, वो क्षर पुरुष की स्टडी है। और जो स्पिरिचुअलिटी है उसको मैं अक्षर पुरुष की स्टडी मानता हूँ। चाहे हम उपनिषद को कंसीडर करें, चाहे हम महाभारत गीता को कंसीडर करें, साइंटिफिकली जो हमारा अपना रियलाइजेशन है वो दोनों एक है, क्योंकि ज्ञान कभी बदलता नहीं है। ये जो हमारे, उसके बारे में कृष्ण भगवान ने नियमन के बारे में लिखा है कि जो भी प्रकटीकरण हुआ है हमारे निर्मल निराकार आत्म स्वरूप से, क्षर और अक्षर के रूप में जो भी प्रकटीकरण हुआ है उसमें सब में नियमन है, और नियमन भी मैं ही हूं, ऐसा कृष्ण भगवान ने कहा है। मैं
थोड़ी सी समरी आपके सामने, और चूँकि हमारा टॉपिक ऐसा है, जो हमारा वेदांत दर्शन है वो भी काफ़ी है, इसके अलावा भारतीय दर्शन में जो कुछ है वो बहुत है। मैं थोड़ा सा एक पढ़ के हाइलाइट्स में बस पढ़ता चला जाता हूँ। पदार्थ विज्ञान के बारे में हमने लिखा है, पदार्थ विज्ञान प्रकृति द्वारा प्राप्त विभिन्न रूपों की आंतरिक संरचना एवं गीता में वर्णित नियमन का ज्ञान प्राप्त कर अनेकानेक जीवन उपयोगी पदार्थों को बनाने की विधियों का आविष्कार है। मानव शरीर सहित सारी प्रकृति आत्मा परब्रह्म का भौतिक शरीर है, जो कि वह बिंदु परब्रह्म की नाभि बताया गया है, जिसके परितः सभी गैलेक्सी के केंद्र पर परिक्रमण करते हैं। विज्ञान की खोज इसी भौतिकता पर शोध करने में कार्यरत है। जो बेसिकली हमने साइंटिफिकली पढ़ा है कि जैसे हमारा सोलर सिस्टम है, जिसमें हमारी पृथ्वी एक प्लैनेट के रूप में है, ऐसे ही बहुत सारे सोलर सिस्टम्स हैं। उन बहुत सारे सोलर सिस्टम्स को मिला के गैलेक्सी बनती है। ऐसे ही बहुत सारी गैलेक्सीज़ हैं। वो गैलेक्सीज़ भी किसी न किसी परब्रह्म की नाभि जो कि बताई गई है उसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं। तो ऐसा मैंने ये जान के लिखा है। इस पदार्थ जगत की रचना अदृश्य अणुओं, परमाणुओं व गुप्त विद्युत चुंबकीय तरंगों जैसे अल्ट्रावायलेट, रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स आदि के साथ साथ कुछ विजुअल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जाल है। इनका विचरण एवं इनके गुणों का अध्ययन करने में वैज्ञानिक लगे आए हैं। इनके उपयोग जान चमत्कारी प्रयोग कर फैली हुई दुनिया को समेट कर छोटा कर दिया है। वैज्ञानिकों ने ईश्वर प्रदत्त आँखों एवं ईश्वरीय चेतना से प्राप्त ज्ञान द्वारा निर्मित एडवांस सूक्ष्मदर्शी, जैसे ये हम आपको बता चुके हैं, यूजफुल डिवाइसेस बना ली हैं। प्रकाश, ध्वनि, ऊष्मागतिकी, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्पिंट्रॉनिक्स, बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बहुत सारी ब्रांचेस के रूप में एडवांस ज्ञान तो अर्जित किया ही है, और साथ ही काफ़ी हद तक इस भौतिक जगत के रहस्यों को जानने का एक चरण पूरा किया है। इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलॉजी की कई शाखाओं के अंतर्गत प्रयोग, शोध एवं इस मायावी भौतिक जगत में भोग विलास की कड़ियों के विकास हेतु भी हम उन्नति देख रहे हैं। आधुनिक भौतिक विज्ञान के अंतर्गत क्लासिकल, क्वांटम, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स आदि में क्लासिफाई करके वैज्ञानिक आगे बढ़ते जा रहे हैं। द्रव्य में द्रव्यमान का कारण यह रहस्य जानने हेतु ये मैं आपको बातें बता ही चुका हूँ। न्यूट्रॉन्स के बारे में मैं आपको बता दूँ, जो मैंने पढ़ के जो भी हमारा जो बेसिक इंटरेस्ट जैसे बचपन से इस साइंटिफिक वर्ल्ड को देखने में लगा, जैसे ही हमने आगे अपनी जो चेतन पुरुष के रूप में जान के या अक्षर पुरुष के रूप में जानने की कोशिश की है, तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि हमारे जो जन्म मृत्यु का चक्र है, इसमें आत्मा के साथ जो मन लगा रहता है और मन के अंदर जो वासनाएं, कामनाएं, फल की आकांक्षाएं ये जुड़ी रहती हैं, और मृत्यु के साथ ये हमारे साथ चली जाती हैं। शरीर छूट जाता है, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां छूट जाती हैं, जो कि चली जाती हैं। ये जो न्यूट्रिनो है, अगर इस एंगल से उसको प्रेडिक्ट किया जाए तो मन की तरह उसका स्वरूप है न्यूट्रिनोज का, और वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट या जो हमारा भौतिक जगत है उसको डिफरेंट वे में प्रोजेक्ट कर देते हैं। इस पे एक मिनट मैं एक मिनट, हाँ, ये जो मैं बताना चाह रहा था, एक संत हैं वहाँ पे वृंदावन में, एस विज्ञानाचार्य जी, जो कि एमएससी केमिस्ट्री हैं, पीएचडी हैं, लेकिन उन्होंने इसको छोड़ के संन्यास लिया है। 20 साल से वो आश्रम के बाहर नहीं निकले और उसमें लगे हुए हैं साधना में। बाई चांस दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एंड हेड रहे प्रोफेसर आरपी टंडन के साथ मैं उनसे मिलने गया। मैं एक रहस्य की बहुत ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ। तो मैं और प्रोफेसर आरपी टंडन बैठे हुए थे, और श्रीमती प्रतिभा पाटिल के जो समधी साहब हैं रिटायर्ड आईएएस, वो थे हमारे साथ, भगत सिंह वर्मा जी। तो उन्होंने हमसे और प्रोफेसर आरपी टंडन से एक बात पूछी, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं बताऊं, जिससे हाँ
उन्होंने हमसे ये पूछा और प्रोफेसर आरपी टंडन से कि आप भी रिसर्च कर रहे हो, मैं भी रिसर्च कर रहा हूँ इस फील्ड में। उनके यहाँ एक साधु रहते थे जिनकी डेथ हो गई। डेथ होने के बाद चूंकि इनका लेवल बहुत आगे बढ़ चुका है, जो संत हैं एस विज्ञानाचार्य जी, उनके 2-3 साल बाद वो उनके सामने खड़े हो गए। जो उनका तलघर में साधना कक्ष है, सारे दरवाजे बंद थे, अचानक खड़े हो गए और उनसे मांगा। उनके पास 1008 गुड़िया की माला थी, एक लाठी थी, वो उन्होंने मांगी कि प्लीज़ हमारी आचार्य जी ये हमको दे दीजिए। उन्होंने कहा लीजिए, उनके पास रखी हुई थी, पकड़ा दी। पकड़ाने के बाद उन्होंने कहा कि एक स्वेटर और ले लीजिए, इस समय सर्दी है, लीजिए पहन लीजिए। उन्होंने दे दिया, उन्होंने पहन लिया। वो माला 1008 गुड़िया की जो माला थी, प्लस वो स्वेटर, प्लस वो लाठी, कह रहे दरवाज़ा बंद बना रहा, उसके बावजूद वो निकल गए। ठीक है, उनका जो सूक्ष्म शरीर था वो उसके लिए ट्रांसपेरेंट है, ये कैसे निकल गए? उस समय पता नहीं, ईश्वर ने मुझे सोच दिया, मुझे ये महसूस हुआ कि जो सूक्ष्म जगत का जो पदार्थ स्वरूप न हो के दिव्य स्वरूप है, वो माला, गुड़िया और वो उसके साथ उसी डोमिनेटिंग जो स्वरूप था उसके साथ मिल गया। लास्ट में, अब मैं ज़्यादा नहीं, चूँकि वेद वेदांत के बारे में नहीं बताऊंगा, लास्ट में एक पोइम ज़रूर पढ़ूंगा जो मैंने खुद बनाई है, जो रियलाइजेशन से आई है। बस एक पोइम मैं आपको सुनाता हूँ। बहुत अच्छा गला तो नहीं है, लेकिन थोड़े से स्वरूप में। पर ब्रह्म तुम्हारे साए में जीवन का हर पहलू रहता, जीवन के कार्य सरोवर में तेरा मुकाम उत्तम रहता। मैं लीन हुआ भौतिकता में, पर दिव्य जगत से दूर हुआ, खो बैठा जीवन मूल्यों को, जी कर भी जी से दूर हुआ। अब सच्चे आदर्श बना करके बस कर्म योग अपनाया है, भूले भटकों को राह दिखा, अब सत्य मार्ग को पाया है। अदृश्य अणुओं की ये दुनिया हूबहू तो दिखती है ही नहीं, आश्चर्य भरा इस स्थूल जगत मेरी मंजिल तो है ही नहीं। हे परम पिता दे दो दृष्टि, जिससे इसका दीदार करूं, सारे लोगों के सर्व ज्ञान, बस एक सत्य का ज्ञान करूं। भटका हूँ कई शरीरों में, भ्रम भाव भरे कई लोकों में, अब दया करो और कृपा करो, बस जाऊं आपके चरणों में। Conferment of PhD on honorary doctorate, honorary PhD on Oriental learning, Mr. Lalu Bodasa B. Mr. Krishnan Chettiar. Mr. P. Bhagavati Appan from Kerala. And our next speaker is Mrs. Nuthan Rao. Yeah, myself Nuthan Rao. I am counselor come handwriting analyst and astrologer and tarot reader and many more activities I do. So varied activities combined put together, I have mixed science and astrology. So here today I am going to present dermatoglyphics, means fingerprint
which is called as alna, शंख चक्र जो होता है ना वो, उसके बारे में बता रही हूँ. Okay. So any person, when he is born with some potential. It is called inborn potential. When inborn potential plus acquired potential, if it is same, plus attitude, it is equal to genius potential. He becomes genius. If your inborn potential is different from your acquired, you will become average. So if you know what is your inborn potential, so definitely your upbringing will change. So how do you come to know? So one is astrology, palmistry, and another fingerprint analysis, face reading. These provide you with the knowledge of inborn potential. Next, handwriting analysis, art analysis, psychometric tests, they provide you what you have acquired later. There are three types of fingerprints. One is the basic arch or arc. These people, see here the arch means there is no triradius. You can see the picture there. These people are practical, materialistic. See the arch, so the more stubborn character. This involves manual dexterity. They are good with their hands. They can be good builder, painter, surgeon, musicians, laborer. See, if all your fingers have arch, then this quality comes as a prominent. If you have mixed, like few arch, few whorl and all, then what is more, more number of fingers having that character becomes the prominent one. Next speaker is Dr. Vishwadev Chakraborty. Institute of Oriental Heritage especially, and I'm very fortunate and privileged to be here at this evening. With a connection with Dr. Abdul Hai from Bangladesh, I had this privilege to meet you all today. And of course, meeting all the precious and beautiful people, along with many renowned in their own respective fields. I'm working with the organization in the United Nations called United Religions Initiative. It's an interfaith organization dedicated to promote enduring daily interfaith cooperation to end religiously motivated violence and to create cultures of peace, justice, and healing for the earth and all living beings. Though we are based in the California, United States of America, but I work as a country head of my country, India. Today, I have observed, and I would be very brief, but before I explain, I would like to really be more interested to learn and be way involved with the Institute to more deeperly finding out the richness of our own heritage. Though this evening, mostly focused has been gone to the astrological point of view as a heritage part of it, which is truth, a fact that is a very enriched subject that cannot be wrapped up in 1 or 2 days conference because it's a very huge. All of you are a very much master on that. But also I believe that this heritage belongs to many thousand years before our ancient culture that rooted deeply, and it's a big answer for many questions today, for many conflict that can be resolved. This is a mostly, I would conclude one story in Hindi that would be very easy for everybody to understand. पहले तो मैं हिंदी में एक कहानी छोटा सा कहना चाहूँगा. कई बार हमारे सामने एक सिचुएशन आती है, तो मैंने एक कहानी इस्तेमाल किया था बहुत जगह ट्रेनिंग के तौर से. एक औरत की एक हस्बैंड की उनकी मौत हो जाती है, तो वो जब मौत होती है तो वो ग्रेव में जाकर हावा करती है. तो सभी लोग देखते हैं पागल हो गए, क्योंकि प्यारे से जो हस्बैंड थे वो गुजर गए और उनका सदमा बर्दाश्त नहीं हो रही थी. तो कोई जो जा रहे थे, जो देख रहे थे, विथ आवर ओन आइज, दे कुड नॉट बिलीव, उनको यकीन नहीं होता था कि ये औरत अपने हस्बैंड की समाधि पे हवा क्यों कर रही है, ताकि ये सर फिर गया है या तो पागल है या तो कुछ तो कर रही है. तो सभी ने देखा, कोई बोला वो पागल हो गई, कोई बोला उनका जो दिल का तसल्ली हो रहा, हवा कर रही है, कुछ तो होगा. कोई बोला नहीं, उनको लग रहा है कि हस्बैंड को गर्मी लग रहा है इसीलिए वो हवा कर रही है. एक आदमी ने उनके पास गया और बैठा सारे दिन से शाम तक और पूछा महिला से कि क्या बात है, आप
इस मिट्टी में क्यों हवा कर रही है? कौन है? बोला मेरा हस्बैंड है जिनको हाल ही में दफना गया है। तो बोले फिर हवा क्यों कर रही है? तो उन्होंने कहानी बताया कि जब हम जिंदा थे तो हम 7 फेरे लेके शादी किए थे, तो शादी में 7 फेरे से हुए थे, लेकिन कुछ महीने पहले मेरे एक यंग लड़का से प्यार हो गया था, और प्यार में से मैं यंग लड़का के साथ रहता था, और मेरे हस्बैंड को वो सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ। तो जब सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ, हस्बैंड का हार्ट अटैक हो गया और हॉस्पिटल एडमिट हो गया, और तब मैं मेरे बॉयफ्रेंड के साथ घूमने गया था। जब मैं वापस आया हॉस्पिटल में, मेरा हस्बैंड में मेरा हाथ पकड़ के कहा, वादा करो 7 फेरे लेके शादी किया है, जब तक मेरे कब्र का मिट्टी ना सूख जाए तुम शादी मत करो। तो मैं हवा कर रहा हूं ताकि कब्र का मिट्टी जल्दी सूख जाए और मैं शादी कर पाऊं। तो ये कहानी इस चीज को दर्शाता है। मैं ये कह के खत्म करना चाहूंगा कि कई समय हमें ये एहसास दिलाती है कि हमें अपना रूट को पहचानना चाहिए, हमें अपना एग्जिस्टेंस किस तरह से है इसको पहचानना चाहिए। मैंने जब इंडिया छोड़कर पढ़ाई करके विदेश में गया तो काफी सारा अंदाजा हुआ, आप लोगों को बहुत एक्सपीरियंस हुआ होगा, लेकिन इतना हम खोज पाए, समझने की कोशिश करें कि हमारे ये रूट की ताकत क्या है। इट्स रियली द मोस्ट एनरिच्ड एंड पावरफुल to give a platform to everyone to deepen into the root of their own culture. ये नहीं हो सकता, एक कभी सबसे बड़ी अच्छी चीज हो सकता है कि अगर हम ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करें जहां हम अपने देशीय जो परंपरागत ऐतिह्य जो है उसमें हम अपना समय बिताकर और अपना सच्चाई को जान पाए। और किस लिए? इट हैज टू बी फॉर द ह्यूमन बीइंग, हमारे शांति के लिए। एक जन ने खूब कहा है कि जिंदगी में सबसे बड़ा धनी वो है जिसका जिंदगी में सुख है। तो हम सब ये यकीन करते हैं, और हम जो ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे पास ज़्यादा प्रिंट आउट नहीं है, हमारे पास आप बहुत सारे नाम चिन्ह हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जुड़े हुए हैं जिनसे आप बहुत संपर्क रखते हैं। हम ये उम्मीद करते हैं, आई एक्सपेक्ट दैट देयर वुड बी ए प्लेटफॉर्म दैट यू वुड मोर इन्वेस्ट टाइम to not only in one aspect but every aspect of our heritage, to create a social platform of cross-cultural and cross-religious dialogue for culture of peace and justice and healing for the earth and all living being. Let's put all living being, because it is indeed very necessary that we recognize all living beings. I invite the please most welcome to be part of the interfaith cooperation for peace and justice. एक आदमी जिंदगी भर भगवान को बोला रहा था, आइए मेरे को दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए। एक दिन देखा, वो सुबह नींद से उठा तो एक आदमी, बुढ़ा आदमी, एक सूटकेस लेके उसका दरवाजा पर आ गया। तो उन्होंने पूछा, आप कौन है? तो बोला, आप जिसको बोला रहा है मैं वही हूँ। तो बोला, तुमको क्या चाहिए? तो पहले बोला, मेरा को मकान चाहिए। अच्छा, ले ले मकान। मेरे को गाड़ी चाहिए, ये ले गाड़ी। मेरे को बीवी चाहिए, ये ले बीवी। मेरे को बच्चा चाहिए, ये ले बच्चा। और वो देख रहा था भगवान जो मांग रहा है वो दे रहा है। वो देख रहा था क्या क्या है अंदर में, सब कुछ दे दिया। लास्ट में एक चीज रह गया, तो भगवान दरवाजा बंद कर दिया, मतलब सूटकेस बंद कर दिया। उन्होंने पूछा, आप सूटकेस क्यों बंद कर दिए? वो मेरे को क्यों नहीं दिया? बट दैट इज पीस। वो पीस के लिए आप मेरे पास आएंगे, इसलिए मैं पीस किसी को नहीं दूंगा। Thank you. Now we are all sitting in the Indraprastha, but we are unable to say. We will only say we are in Delhi. This is a peculiarity. We are the citizen of a peculiar country like India. If you go to the east, you will be hearing Bengali. If you go to the west, you will be hearing Gujarati. If you go to the north, you will be hearing Kashmiri. If you go to the south, up to Kanyakumari, you will be hearing Tamil. So many other languages, that is, more than 192 languages are running in the country. Nearly 300 religions are there in this country. Our culture, our food habit, our dresses are different. Even though we are one. Delhi is our capital.
If we are telling in English, total my lecture, some people will be definitely tell, you are citizen of India little and outsider more. I don't want to take that bad name. So further, my lecture also will be peculiar. I may say different languages. Please don't mind. Next speaker is Mr. P.K. Patnaik from Odisha. Dignitary in the dais. Myself, Engineer Pradeep Patnaik, came from Odisha, and I am under the inspiration of Guruji Dr. Nimai Banerjee and M.N. Subbarao, Andhra Pradesh. So, since last 16 years of research on Astrovastu, I am having a lot of research in global countries and cities in the world. So, my topic is Vastu criteria, critical city. So all this now, as of now, it has been observed by International Intelligence Unit on the basis of GDP, gross domestic product. More than 200 cities are being critical. So all these critical cities, it is no time to tell all these things, but I am telling the Astrovastu chemistry for mystery of the city. What is the fundamental criteria of astrological and Vastu to make the city critical? So, to make the city critical, the 5 fundamental elements of Vastu, these are affecting energy. If it is not in equilibrium, then the position of the specific location or Vastu leads towards nuisance, non-violence and dangerous, and gradually toward destruction. The design of Vastu telling the city's destruction. So there are 3 lots or 3 directors to make the plots of criticalism of the city. First of all is Mars. Is direction of south side, is the lord of Yama direction, and is the karak or significant for ego, aggressive enmity, with fond of administration and rigidity, again liking of arrogant war, bleeding and injury. And next director is Venus in fire corner. So the fire corner is significant of the fire lord is fire, burning, bombings and explosion. Again injury, bleeding and body pain. Then third director is West, Saturn, the planet Saturn. The poverty, pain and punishment, miseries, melancholy and misfortunes, spirituality, science and technology. Finally also disease, dreadness and death. So under these 3 directors, the chief managing director in the Vastu is Rahu planet. Rahu planet is authorized as the managing director for Vastu. He is authorized by Brahma. It may not be in the astrological equations, but Rahu is the powerful in Narith, dragon corner in Vastu. So in the left side, Saturn, right side, Mars, and conjuncting the corner, fire corner, Rahu is the main creator for making the cities violent, dangerous, and leading towards critical. So the external, Rahu's the Karako is external attack suddenly. Entry of the people from different communities and different angles, and disguise, shrewd, sudden attack, and updated modern science and technology. In this concept, if the 3 directors as conjuncting under the chairmanship of Rahu, then any cities after certain period of span of time of growth, they are putting the attack. In this scene, we will go to the major critical cities and its effect. So many types of critical cities. First we will tell in the country of Japan, the famous city Hiroshima under the attack of during Second World War 1945. When Hiroshima city, you see, I will show some pictures, then I will note the details. I have told all the fundamental criteria. This is the Hiroshima city. You see the Hiroshima city. The Hiroshima city is under the chairmanship of Rahu. So in the south side, so many water bodies and rivers are flowing. So this is the cause of destruction of Hiroshima city. Similar, the Hiroshima city, another city is coming in Odisha, Katak Bhubaneswar twin city. It is similar to the cities. Bhubaneswar may not be disturbed,
but near Katak, Barang and Naraj, the same sequence. It may be in the next 10 years, 20 years, 15 years, 50 years or 100 years, there will be the attack in the twin city, Katak, Bhubaneswar. Next, after Hiroshima, another city is the Nagasaki city. If the same city is the Nagasaki, you see the scenario of Nagasaki city. If you see the Nagasaki city, the same scenario, whatever is in the southwest, makes the destruction. And also the similar city in Nagasaki, in our India, Mumbai is the similar city is Mumbai. The Mumbai city also same sequence. After getting growth of 40 years, since 1991, Mumbai city is going to be very critical day by day since 1991. As of time, during various span of time, Mumbai city is getting very critical. So, then we'll go to New York, World Trade Center attack in 2001. You see the New York is same sequence in New York. The New York is situated in a location as per Vastu. New York in the same condition. And as per the New York, World Trade Center is under attack. Then again Pentagon. The New York is the Pentagon. Pentagon is the size. The Vastu is not, it is not recommended at unauspicious Vastu. So Pentagon is the same sequence. Then recently in the 3-4 months, Paris city is under attack. You see this Paris city in river, how it is rotating in Paris city. So this is the sequence of Paris. Not only this attack, since 300 years before, 70,000 people and various span of time Paris city is under attack. Then we will go to the London city. In London city also same sequence. No, Calcutta city is not this much of a problem. It is only glory and gradually diminishing glory, not under that much of critical city Calcutta. It is in different angle, maybe critical, not in critical. Then in recent past Pathankot operation, in India the Pathankot operation, you see the scenario of Pathankot. In Pathankot, there is a Madhapur canal and Swarna river conjoining in the south and southeast position under the sequence of the triangular series of Pathankot. And I may tell the Indian Parliament's New Delhi, it is under the corridor of the triangular series of circular shape. Similarly, Jehanabad jail, Jammu Kashmir Assembly and Akshardham temple. And also I am telling this Iraq, this is very critical city Baghdad. You see the Iraq scenario. In the southwest there is sand and there is seasonal rivers and non-seasonal rivers are flowing across the Baghdad city. So it is day by day it is getting critical. And they also Karachi city in Pakistan. You see the scenario of the Karachi city. And also Cape Town city, South Africa. This is the city of the Cape Town city, and gradually these cities are gradually very much violent, unsafe, unfriendly. So, apart from all, there are another 200 cities are there to having the violent. So, lastly, I may conclude one thing. If our forefathers and 18th sages, hermits have given that much of science, but we have to be alarmed them, and all the science has not been ignored. Thousands and thousands crores of rupees of the plant to invest of the organization, institution or any sort of industries, but if some will have some thrust on this part, so many thousands crores at least be minimized. I think so. Thank you all. Thank you for listening and patiently all this thing. I am Dr. ARP Saxena from Pune. हमारा रिसर्च पेपर अल्टरनेटिव मेडिसिन के ऊपर है। आमतौर पर जब कोई इंसान बीमार हो जाता है तो हम एलोपैथिक, आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक डॉक्टर के पास में भागते हैं।
एलोपैथिक सिस्टम अंग्रेजों ने हमारे ऊपर थोपा, वो उसको प्राइम टेक्नोलॉजी कहते हैं, और हमारी जो वेदों से पुराणों से आई हुई चिकित्सा पद्धति है उसको वो अल्टरनेटिव कहते हैं। मैं उनको खुश करने के लिए इस उनके बयान को एक्सेप्ट कर लेता हूं, लेकिन आपको बतला देना चाहता हूं कि हमारी जो चिकित्सा है, जो हम आपके सामने बतलाने जा रहे हैं, ये प्राइम है, इसको कोई नकार नहीं सकता है। जब से मनुष्य ने इस धरा पर जन्म लिया है उस समय से अपने ज्ञान को विकसित करते हुए विज्ञान एवं यंत्र विज्ञान के क्षेत्र में आश्चर्यजनक उन्नति की है, परंतु आज भी ऐसे अनसुलझे प्रश्न हैं जिनका संतोषजनक एवं सर्वमान्य समाधान। उनमें से ही एक प्रश्न है कि ऐसी कौन सी वस्तु है जो जीव को जीवन देती है। यह जीवनदायिनी शक्ति आज भी एक रहस्य है। हम जीवनदायिनी शक्ति को आत्मा या प्राण के नाम से परिभाषित करते हैं। यह शरीर को जीवन देती है, पर शरीर में यह रहती कहाँ है? जैसे ही प्राण शरीर से निकल जाते हैं मनुष्य मर जाता है। प्राण शरीर से क्यों निकल जाते हैं? निकलने के बाद प्राण कहाँ जाते हैं? उसका स्वरूप क्या है? इनमें से किसी भी प्रश्न का समाधान विज्ञान के पास नहीं है। उपरोक्त तमाम प्रश्नों के उत्तर सूर्य किरण चिकित्सा भी नहीं दे सकती है। क्या प्राण को चुस्त दुरुस्त किया जा सकता है? इसका सकारात्मक जवाब सूर्य किरण चिकित्सा के पास है। शारीरिक स्वास्थ्य का सीधा संबंध प्राण या जीवनदायिनी शक्ति के स्वास्थ्य यानी मजबूती पर निर्धारित है। इस धारणा को ध्यान में रखते हुए यह कहा जा सकता है कि सूर्य एकमात्र ऐसा शक्ति का स्रोत है जो सारे जीव जंतुओं को स्वस्थ जीवन देता है। सूर्य किरण चिकित्सा ही एक ऐसी प्राकृतिक उपचार पद्धति है जो सूर्य की मदद से की जाती है और प्राण या जीवनदायिनी शक्ति के स्वास्थ्य को बनाए रखती है। अप्रत्यक्ष तौर पर जीव के शरीर के स्वास्थ्य को भी बनाए रखती है। आदिकाल से बहुत सी सभ्यताओं में सूर्य का सम्मानीय स्थान है और सूर्य की पूजा की जाती है। पूर्ववर्ती इजिप्शियन सभ्यता, ग्रीक सभ्यता और हिंदू सभ्यता इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। यहाँ तक कि आधुनिक विज्ञान भी यह सुनिश्चित करता है कि जब तक हमारे सोलर सिस्टम में सूर्य विद्यमान है उसी समय तक पृथ्वी पर जीवन संभव है, अन्यथा सब नष्ट हो जाएगा। सूर्य की शक्ति का उपयोग करने की कला भारत में युगों पुरानी है। समय के साथ यह विद्या यहाँ से इजिप्ट, ईरान और चीन पहुँची, वहाँ से ये पाश्चात्य देशों में पहुँची। उस युग में सूर्य चिकित्सा का वैज्ञानिक आधार लिखा नहीं गया था। यह चिकित्सा धार्मिक भावना एवं विश्वास से की जाती थी। इसका ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को मौखिक तौर पर दिया जाता था। बहुत ही ज्ञानी एवं इस विद्या में पारंगत व्यक्ति ही इस पद्धति का उपयोग करके उपचार करते थे। सूर्य किरण चिकित्सा पद्धति को नई चिकित्सा पद्धतियों जैसे एलोपैथिक एवं शल्य चिकित्सा आदि के आने पर जबरदस्त धक्का लगा। नई चिकित्सा पद्धतियों ने पुरानी सूर्य किरण चिकित्सा पद्धति को लगभग विस्थापित कर दिया, लेकिन अब लोगों ने यह महसूस कर लिया है कि जब असाध्य रोगों की चिकित्सा की जाती है, नई चिकित्सा पद्धतियों के साइड इफ़ेक्ट बहुत होते हैं। इतना ही नहीं, वांछित लाभ भी नहीं मिलता है। अब वे लोग फिर से वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों की तरफ उन्मुख होने लगे हैं। ऐसी कोई भी चिकित्सा पद्धति जिसका वैज्ञानिक आधार न हो, आज के पढ़े लिखे लोग नहीं अपनाएंगे।
अतः सूर्य किरण चिकित्सा पद्धति पर काफ़ी खोजबीन की गई और एक वैज्ञानिक तरीके से इस विद्या को सही ठहराया गया। मैंने इसके ऊपर बहुत रिसर्च वर्क किया है, जो कि मेरी एक हिंदी की बुक जो मैं लिखी है उसमें पूरा डिटेल दिया हुआ है। यहाँ पर उस विषय को हम डिटेल में बात नहीं कर सकते हैं क्योंकि समय बहुत कम है। I'd like to define a word rishi. A word rishi is derived from the word research. The person who does research is called rishi. From the Sanskrit, the word rishi derived from researchers. Okay, I can speak in Hindi also. If you would like to listen in Hindi, if you would like Hindi comfortable, then I can speak in Hindi also. Or if you English, all right. First of all, I would like to tell something about the planet Sun. Once upon a time, there is a small story. I would like to present you a story first. People are pouring water to sun. People are just taking some lota and pouring water to sun, and they are looking sun from the rays of sun from the water, because water is transparent. They look sun from the water, and their inner part, below the stomach, their part is dipped in water, and their upper part, that is in atmosphere. The upper part is in atmosphere, and the lower part is in water, and they pour water to the sun. What happens to that? By doing that, by pouring water to the sun, what will happen scientifically? People don't know the reason. So one people was pouring water like that in some place, in some sea or in some river. One people was dipped his below part to the water, and he was pouring water to the sun. Then next man came there and he said, "Eat that. What are you doing?" Then the next man said, "I am nothing. I am just praying sun. I am putting water to the sun." Then the next man said, suppose the next man is B. Then the B man said that, "Okay, then I will also pour water." Then he turned to the west direction and he started pouring the water. Then the man who was pouring water to the sun said him, he became exclaimed, and he said that, "What are you doing facing to the west direction?" Then he said, "The sun is very far, billions, trillions light year far from the earth, and you are pouring water to the sun, and you think that sun will get water if you pour from here? Then I am pouring water to my village, which is 7 kilometers far. If that is possible, if you pour water to the sun from here, then I can also pour water to my village, which is 7 kilometers west from here. Is that correct?" He said like that. So that there is a weakness in astrology, weakness in astrologers, because those astrologers couldn't prove that what happens when we pour water to the sun. So I am here going to prove you what will happen when you pour water to the sun. First of all, when we start pouring water to the sun, the solar rays is in white color. Just before me, somebody said about the rays and radiations of sun. The rays of sun is in white color. When we pour water to the sun, the water makes a role of a prism. Water does the role of a prism. The prism separates water into 7 different colors. 7 different colors are red color, violet color, indigo color, yellow color, blue color, and green color. Our body has not got any capacity to divide solar radiation into 7 different rays. But when we start pouring water to the sun, when the solar rays penetrate from the water, then it get divided into 7 different rays. And what will happen to those 7 different rays? Please listen. Our body has got 7 different colors. The red color goes to our blood. The divided 7 colors, the red color goes to our blood. The blue color goes to our nerve system, because our nerve system, you can see the nerves, blue nerves. The blue rays goes to our nerve system, the red rays goes to our blood, the green rays goes to our pancreas. You can see the image of pancreas on Google. The color of pancreas is green. So the green color goes to the pancreas, and the orange color goes to the heart. You can go to some operator who does operation of heart, then he will tell you the color of the heart. The color of the heart is yellow color, and the yellow color goes to the heart. Now which color is remaining? The color indigo. Indigo color goes to the kidney. The color of kidney is indigo, and violet color goes to the liver. The color of the liver is violet. And next color, yellow color. And the yellow color goes to the medulla oblongata of our brain. There is a medulla oblongata in our brain which stores the memory.
our memory power always gets stored in the medulla oblongata. So the yellow color goes to the medulla oblongata, and below part there are no any organism where we can give the sunlight. So the upper part, नाभि के ऊपर का part जो है, upper parts above the navi, that all get above the stomach, those all parts get the positive solar radiation, and it can cure from the diseases like liver, from the diseases of pancreas, from the diseases of heart, from the diseases of blood, from the diseases of nerves and everything. So pouring water every day to the sun helps you to get removed from the diseases, and this is the scientific reason of pouring water to the sun. My name is Naresh Singh. I am from Kathmandu, Nepal. मेरा ये मानना है और मेरा ये एक्सपीरियंस है, 21 इयर्स का मेरा जो एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको, मेरा ये मानना है कि इफ़ आप सुबह उठते हो तो कम से कम आपका राशि क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है. मानो आपका कर्कट है, मानो आपका मीन है, कोई भी है आपका राशि, तो ऐसा वर्ड बोलो जो सुबह आपका राशि से मीट खाता है. आप ट्राई करके देखो, मैं बोलता नहीं, ट्राई करके देखो. आप एक बार इसको ट्राई करके देखो, आपका दिन अच्छा रहेगा. ट्राई करके देखो, कम से कम आपका स्टार्टिंग खराब है, स्टार्टिंग खत्म है, तो फिर बात बनता नहीं है. सबसे पहले डेली लाइफ एस्ट्रोलॉजी जो मैं बताने चाह रहा हूँ ये एक है. इसमें एक दूसरा बात है कि मेरे को ये ग्रह लगा हुआ, मेरे को ये ग्रह है, मेरे में ये ग्रह घुसा हुआ है, मेरे को शनि का अड़ैया लगा है, शनि का 7.5 लगा है, बृहस्पति चांडाल योग है, अंगारक योग है, पितरी दोष है, दुनिया 200 लगा हुआ है. इसको चेक कैसे करेंगे? सिंपल सी लॉजिक, एक मंथ का कैलेंडर बना लो. एस्ट्रोलॉजी डेली कैलेंडर, द सिंपल लॉजिक इज एक कैलेंडर आप बना लो. कैलेंडर में आप लिखना शुरू करो कि दिन के हिसाब से रात को सोने समय में आप बना लो कि दिन कैसा हुआ. मानो बना लो आप, ठीक हुआ तो ठीक, रंग गलत हुआ तो गलत कर लो. एक महीने में आप इसका नमूना बना लो और उसके हिसाब से आपको डे का हिसाब आ जाएगा, कैलकुलेशन आ जाएगा. जैसे संडे टू सैटरडे है, संडे टू सैटरडे तक का मतलब आपको मालूम हो जाएगा कौन सा प्लान गड़बड़ चल रहा है, ये तो आपको मालूम हो जाएगा. कम से कम एक महीना का कैलकुलेशन बसा लो, एक बार ट्राई करके देख लो. इसको भी आप एक बार ट्राई करके देख लो सर. और दूसरा बात मैं बताने जा रहा हूँ, सिंपल सी बात है कि अब जैसे कोई आ गया, डॉक्टर आ गया, इंजीनियर आ गया, कोई बंधु आ गया आपके पास में. अब आपको सबको कुछ न कुछ टेंशन तो लगा हुआ ही है, सबको कुछ न कुछ, राहु केतु शनि संकटा दुनियादारी ये तो लगा ही है. मानो सर कोई आ गया आपके पास में, क्लाइंट आके बैठ गया, सब चीज़ है उनको पास में, कम से कम एस्ट्रोलॉजी हमको एक अच्छा डिसिप्लिन भी सिखाते हैं. ये बात हमको मानना पड़ेगा. हम लोग, मैं तो ये करता हूँ सर, मैं अपना प्रैक्टिस में करता हूँ कि उनको उनका प्लानेट का जो ट्रीटमेंट करना है, देयर इज 3 टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट आई नो, मंत्र, तंत्र, जेम्स हीलिंग एंड ऑल द गॉड्स. यही है ट्रीटमेंट. आप उनको कोशिश करो उनका विल पावर स्ट्रॉन्ग करने के लिए. आप उनका विल पावर स्ट्रॉन्ग करोगे ना तो कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट का लाभ होगा. नहीं तो यह है कि भाई ये लगा लो, ये धारण कर लो, ये लॉकेट कर लो, ये कर लो. भाई कर लो तो कैसे, उसका एनर्जी कैसे करेगा ये बात नहीं बताऊंगा. ये बात हरियर बता के चला गया कि कैसे करेगा, सन का रिफ्लेक्ट कैसे होता है, बॉडी में कन्वर्ट कैसे होता है, ये बता के चला गया वो. मैं इसको आगे नहीं बढ़ाऊंगा. तो सिंपल लॉजिक क्या है कि आप उनका विल पावर को स्ट्रॉन्ग और प्रमोट करो. इससे होता क्या है ना कि उनका एनर्जी के वाइब्रेशन से करके जो आप उनको देंगे ना उसका पॉजिटिव रिएक्शन हो जाएगा, बच जाएगा. उनका जो पैसा आप पर खर्च किया ना वो उन पर बच जाएगा. मानो कोई डिप्रेशन में है, 90% तो रोगी वाले आते हैं दिखाने के लिए, कुछ ना कुछ लगा ही रहते हैं उनको. ये लगा किसी के पास में धन नहीं, किसी को एजुकेशन चाहिए, किसी को मैरिज खराब है, किसी का लव नहीं हुआ, किसी का ये नहीं हुआ, किसी न किसी को कुछ ना कुछ तो लगा ही है. उसको ठीक करने के लिए सबसे पहले तो उसका विल पावर को आप स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में सबसे पहले विल पावर भी आते हैं. उसको एक डिसिप्लिन मेक बनाना पड़ेगा. दिस इज 21st एस्ट्रोलॉजी. जिस जमाने में बनाए हुए थे 5 शताब्दी, उसका अभी तक द सेम रेशियो, अभी तक देयर इज सो मेनी प्लैनेट आ चुके हैं. उसका रिसर्च कौन करेगा, उसका वाइब्रेशन कौन बताएगा? भाई हमको तो आगे बढ़ना पड़ेगा. 21st सेंचुरी है भाई, वही बात करेंगे तो फिर खत्म कहानी. कुछ तो एग्जाम्पल तो चाहिए हमको, साइंटिफिक चाहिए भाई. क्योंकि जो क्लाइंट है आपको कम से कम 200 चैनल में सुबह 300 बाबा तो शुरू आ जाते हैं, एस्ट्रोलॉजी ऑल द थिंग्स. तो सबको मालूम हो चुका है कि एस्ट्रोलॉजी क्या है भाई. हमको तो पूरी साइंटिफिक तरीका से बताना पड़ेगा कि भाई है, क्योंकि जो आगे वाले हैं उनको तो साइंटिफिक चाहिए. भाई ये धारण कर लो, ये आगे बढ़ा, भाई कैसे बढ़ेगा? 2 दिन बाद में कंप्लेन शुरू हो जाएगा. इसका लिए आपको सबसे पहले प्रमोट करना पड़ेगा सूर्य को, विल पावर को. उनको विल पावर नहीं दोगे, आप उनको अच्छा डिसिप्लिन नहीं सिखाओगे एज पर एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आगे बढ़ेगा कैसे बंदा?
ये तो सबसे पहले हमको करना पड़ेगा कि एस्ट्रोलॉजी डिसिप्लिन हमको आगे बढ़ाते हैं, इसे प्रमोट करते हैं, ये हमको सबसे पहले सिखाना पड़ेगा। दिस इज माई, मैं ये करता हूं। और दूसरा एक ले लेता हूं, अब जैसे आप अभी सब ने बताया है कि जितने भी अभी अग्रज लोग बता के यहाँ से गए हुए हैं कि एवरीबडी सेइंग अबाउट द डायग्नोस एंड ट्रीटमेंट। एवरीबडी, जो भी यहाँ पर बंदा आए हुए हैं कि डायग्नोस ये है, राहु ये करते हैं, केतु ये करते हैं, सूर्य ये करते हैं, सबका काम वही है। जब डायग्नोस करना है तो पहले अच्छे से कर लेना पड़ता है। सुपथाराय अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान जुजुद्ध अस्मत् जुहुरानमेनो भूष्टंते नमोक्तिं विधेम नमो अग्नये नमः। ज्योतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित्सुख स्वरूपाय शामिने तापहारिणे नमो विवेकानंद सूरये नमो नमः। শুনে সবে আসে বৃন্দাবনে বাজে শ্যামের বাঁশি, রাধা রাধা বলে শুনে সবে আসে, রাধা রাধা বলে শুনে সবে আসে, বৃন্দাবনে বাজে শ্যামের বাঁশি। आशा निराशा माया तुम्हारी भूल रहे इसमें नर नारी, मिनती हमारी ए गिरधारी बुझत। संजीव पाठक फ्रॉम चैतन्य योगा फाउंडेशन। कि कुछ एक आसन या कुछ प्राणायाम योग है। योग कई भागों में बटा हुआ है। आप लोग विद्वान लोग हैं, आपके सामने हमें बताना सूरज को दिए दिखाने के बराबर है, लेकिन फिर भी थोड़े थोड़े जो पिछले 20 साल का अनुभव है, जो 20 साल का तजुर्बा है, उसमें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। लंबी गहरी श्वास लेते हुए, हर बार श्वास आवश्यक है अभ्यास में। एक, पूरे बॉडी को स्ट्रेच करते हैं, सिंपल अभ्यास, वापस नीचे। दो, इस बैलेंसिंग आसन से ये हर कोई कर सकते हैं। वापस तिर्यक तारासन, दोनों पैर के बीच फासला, हाथों को ऊपर इंटरलॉक, और अपने दाईं तरफ से किसी भी अभ्यास में आसन को प्रारंभ करते हुए राइट साइड से करना चाहिए। एक, धीरे धीरे बॉडी को जितना आप झुका सकते हैं झुकाएं। फिर श्वास लेते हुए ऊपर, दूसरी तरफ, नीचे। आसन में श्वास का बड़ा कंफ्यूजन रहता है। लोग अक्सर पूछते हैं कि श्वास कैसे लेना है, कैसे छोड़ना है हर अभ्यास में। आज मैं बेसिक्स रूल आप लोगों को बता रहा हूँ, जो याद रखेंगे तो कभी दिक्कत नहीं होगी। दो बार करके दिखा रहे हैं, जो कि आप लोग जनरल प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये ग्रेविटेशनल श्वास लॉ के अकॉर्डिंग राइट साइड हमारी ब्रीथिंग चलती है। टुवर्ड्स अर्थ, एक सामने से एक पीछे से, बॉडी और हाथ का पोजीशन जिस तरफ मुड़ेंगे वो हाथ टर्न करेंगे पीठ पर। वापस किसी भी डायरेक्शन में जब आप दूसरी तरफ बना रहे होते हैं तो धरती से ऊपर की तरफ जाते हैं तो ब्रेथ इन करना है, वापस और धरती की तरफ नीचे जाएंगे तो ब्रेथ आउट। फिर से दूसरी तरफ। और दूसरा, जब आप कल फेफड़ा श्रिंक कर रहा है, वापस सिकुड़ रहा है, तो वहां पे एक्सेल। Professor Colonel A. Balasubramanian, an eminent educationist, a soldier of rare valor, and a practitioner of Oriental heritage. He is the founder of the prestigious Sri Balaji Society, Pune. Professor Bala was the first in India to use Indian heritage with the discipline of the armed forces to educated management graduates. His students in the corporate circle are known for displaying strong values based on the Indian culture with high degree of self-discipline. Friends, I am 70 plus. After seeing this 80 plus, walking like a 60 plus, I learned something today. My life is full of dramas.
28 years in the army, very tough life. The toughest life was as an academician for 28 years. And I'm still continuing. This is very difficult. But in both the field, I had an opportunity to serve the people. I have produced about 12,000 alumni, but we are still learning. And this opportunity is an eye-opener. I request these organizers to take this event to other part of the country. It is great learning for me today. We all are into glittering world. I think it's the right time that the national heritage movement, this movement has to reach every corner of this country. Otherwise, nobody can save this country. Thank you. Speaker is Dr. Professor K. Divakaran. 10 times and 10 times like this, and your leg, you have to give the tips. The diabetic, accumulate in the hands and leg. That will be creating problems in later. So 10 exercises given by our rishis. You have to proceed that 10 exercise. Your diabetes can control and you can overcome the diabetics. And also gooseberry. There is a tested medicine that is given by Ayurveda. You can take the juice of gooseberry, 1 glass plus some little bit of turmeric powder every day morning with empty stomach. You can overcome the tiredness and frequently urination also. Brittle diabetic, also known as unstable diabetes or liable diabetes, is the term that was traditionally used to describe the dramatic and recurrent swings in glucose levels, often occurring for no apparent reason in insulin-dependent diabetics. This term, however, has no biologic basis and should not be used. Still, type 1 diabetes can be accompanied by irregular and unpredictable high blood sugar levels, frequently with keratosis and sometimes with serious blood sugar infection, gastroparesis, which leads to erratic absorption of dietary and carbohydrates. Thank you very much for giving an opportunity to say something about diabetes. Dignitaries on the dais and the learned audience in front of me, this is indeed a great honor for me to address you this afternoon. The title of my talk is Role of Ayurveda in the Treatment of Parkinson's Disease. Now, many of you might be knowing that Parkinson's disease is a dreadful movement disorder, and it is the second most common degenerative disorder of the brain. The main symptoms of this disease are tremor of hands and legs, rigidity of the body, postural instability, and slowness of movement. There is no cure for this disease. Once a person has Parkinson's disease, the symptoms get worse and worse day by day. He faces severe debility, and ultimately it leads to morbidity or death. It is estimated that as much as 2% of the population above 65 years of age actually suffer from this disease. Although it is known in Western medicine in the late 19th century, and research has been going on Parkinson's disease since the last 50 years, no permanent cure for this disease exists in conventional medicine. When we look at traditional systems of medicine, like in India or in China, we see that the description of this disease and a prescription of its cure exists in those traditional systems of medicine, where primarily herbal therapy is used for the treatment. When we survey the latest scientific literature on Ayurveda, we see that several herbs have passed the scrutiny of modern science, and they can
they can act as very good cures of Parkinson's disease. I will talk about some of these herbs in my present lecture. It is very surprising that in Charak Samhita, which was compiled some 5,000 years ago, a mention of 4 herbs is there for the treatment of Parkinson's disease. At that time, this disease was known as Kampavata. So when we look at the symptoms of Kampavata, we see that they exactly match with what we now call as Parkinson's disease. These 4 herbs are Mucuna pruriens, Hyoscyamus niger, Sida cordifolia, and Withania somnifera. Mucuna pruriens, in Bengali it is called Alkushi, in Sanskrit it is called Atmagupta, and in Hindi it is called Kiwanch. This is a tropical legume, and it is very uniquely studied for the treatment of Parkinson's disease in many laboratories in the recent times. In 1995, a multicentric preclinical trial reported for the first time its validity for the treatment of this disease. Here, 60 Parkinson's disease patients were treated for 12 weeks with this herbal medicine, and the study found that statistically significant improvement took place in the patients. The advantages of mucuna therapy are attributed to several ingredients contained therein. Therefore, the need of the hour is to isolate the active ingredients from mucuna, which may hold good promise for developing into effective drugs for Parkinson's disease. For example, in our laboratory at the Indian Institute of Chemical Biology in Kolkata, we have been able to isolate or identify an isoquinoline alkaloid, which has excellent anti-Parkinsonian properties. So we believe that this can, in the future, develop as an independent drug for the disease. मेरा विषय है योग कारक ग्रह और रत्न। जब भी हम रत्न सिलेक्ट करते हैं तो वो कैसे करना चाहिए उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम इस बात पर विचार करते हैं कि रत्न करते क्या हैं। रत्न का सीधा संबंध ग्रहों से है। जैसे माणिक है, माणिक सूर्य का रत्न इसलिए है क्योंकि माणिक एक ऐसा पत्थर है जो सूर्य की रश्मियों को एब्जॉर्ब करता है। मोती एक ऐसा रत्न है जो चंद्र की रश्मियों को एब्जॉर्ब करता है। तो जब भी हम कोई रत्न धारण करते हैं तो उसका सीधा सा अर्थ यह है कि वो ग्रह बलवान हो जाएगा। यदि हमारी कुंडली में षडबल में यदि कोई ग्रह कमजोर है, जैसे मान लो उदाहरण के लिए बृहस्पति कमजोर है और एक यूनिट से कम है यदि बृहस्पति, तो निश्चित मानिए कि बृहस्पति गोचर में जब भी हमारे पक्ष में आएगा और योग कारक ग्रह होने के बाद भी वो हमें अच्छा फल नहीं देगा क्योंकि वो कमजोर रहेगा। इसलिए उसको बलवान करने के लिए हमें पुखराज पहनना चाहिए। ऐसे ही किसी भी ग्रह को बलवान करने के लिए हम रत्न धारण करते हैं। रत्न धारण करने का अर्थ ये कदापि नहीं है कि हम रत्न धारण करने से ग्रह शांत होता है। कई हमारे साथी ज्योतिषीगण जो है वो अक्सर ये सलाह देते हैं, किसी का राहु यदि खराब है तो वो बोल देते हैं गौमूत्र धारण कर लो, इससे राहु शांत हो जाएगा, मगर ऐसा नहीं है। राहु यदि अनिष्टकारी है तो वो और बलवान होकर और ज़्यादा हानि पहुंचाएगा। इसलिए रत्न धारण करने के मामले में सबसे पहला सिद्धांत तो यह है कि रत्न धारण करने से ग्रह बलवान होता है। अब रत्न कौन सा पहनना चाहिए ये हम अपनी कुंडली के आधार पर विचार करें कि हम सबसे पहले अपनी कुंडली में ये देखें हमारा लग्न कौन सा है और हमारे लग्न के हिसाब से कौन सा ग्रह जो है शुभ फलकारी है। जो ग्रह शुभ फल देने वाला है उससे संबंधित रत्न धारण ही करें। दूसरी बात, जब भी हम कोई रत्न पहने तो ये जरूर देखें कि वो रत्न जिस ग्रह से संबंधित है वो ग्रह कहीं कोई अशुभ प्रभाव तो नहीं दे रहा। कई बार मेष लग्न की कुंडली है, वृश्चिक लग्न की कुंडली है या कर्क लग्न की कुंडली है, मगर मंगल बहुत ज्यादा कारक ग्रह होता है। जैसे कर्क लग्न की कुंडली में मंगल सबसे ज्यादा कारक ग्रह होता है और सबसे ज्यादा शुभ फल देने वाला भी है। मगर यदि किसी जातक की कुंडली मांगलिक है तो उसे मूंगा नहीं पहनना चाहिए। तो हम जब भी रत्न धारण करें तो ये जरूर देखें कि उस रत्न के कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, जैसे गोलियों में हम देखते हैं। ऐसे ही रत्न कब पहने उसके मामले में सीधा सा नियम है। जो बार होता है उस बार से संबंधित ग्रह की पहली होरा सूर्योदय से 1 घंटे के अंदर होती है। जब भी हम कोई रत्न धारण करें, यदि हम माणिक्य पहनना है तो रविवार के दिन सूर्योदय से 1 घंटे के अंदर धारण कर लें, सबसे बेस्ट पीरियड ये होता है। और राहु काल इत्यादि का विचार हम रत्न धारण करने में नहीं करते। अब मैं एक छोटी सी बात कर रहा हूँ योग के बारे में। योग के बारे में कुछ लोगों ने कल काफी बोला, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि योग का संबंध भी ग्रहों से ही है। राजयोग जो है, योग के कई प्रकार हैं, राजयोग, मंत्र योग, लय योग, हठ योग,
ज्ञान योग, भक्ति योग, प्रेम योग, अलग अलग योग के मार्ग हैं। और योग का जो वास्तविक अर्थ होता है, योग का जो वास्तविक उद्देश्य होता है, वो होती कैवल्य की प्राप्ति, अर्थात मोक्ष के निकट जाना। तो किस व्यक्ति के लिए कौन सा योग ज्यादा लाभकारी रहेगा, या योग की कौन सी क्रिया उसके मोक्ष तक पहुंचने के लिए बेहतर रहेगी, या उसके जीवन में उसके कल्याण करने के लिए बेहतर रहेगी, इसको जानने के लिए भी हम ज्योतिष का सहारा ले सकते हैं। ज्योतिष के जो हमारे 9 ग्रह हैं, इनका संबंध विशिष्ट योगिक क्रियाओं से है। राजयोग, राजयोग का संबंध है सूर्य से। जिस जातक की कुंडली में सूर्य बहुत प्रबल हो और बहुत शुभ फलकारी हो, या सूर्य योग कारक हो, ऐसे जातक को योग के लिए सबसे बेस्ट मार्ग होता है राजयोग, से राजयोग चुनना चाहिए। चंद्र, जिनका चंद्र उत्तम है, चंद्र शुभ फल देने वाला ग्रह है, वो जातक भक्ति योग को चुने। वो ईश्वर के भक्ति के द्वारा योग में केवल्य की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। जिन जातक की कुंडली में मंगल बहुत अच्छी स्थिति में है, या मंगल शुभ फल देने वाला ग्रह है, वो योग के हठयोग के मार्ग को चुने, वो योग को जीवन में हठयोग के रूप में अपनाए। जिस जातक की कुंडली में बुध अच्छी स्थिति में है या शुभ फलकारी है, ऐसे जातक मंत्र योग का प्रयोग करें, अर्थात योग की सिद्धि के लिए वो मंत्रों का प्रयोग करें। जिस जातक की कुंडली में बृहस्पति बहुत ही अच्छी स्थिति में शुभ फल देने वाला हो, शुभ प्रभाव देने वाले हैं, ऐसे जातक योग के लिए ज्ञान योग का मार्ग अपनाएं, सांख्य योग का मार्ग अपनाएं। जिस जातक की जन्म कुंडली में शुक्र की पोजीशन बहुत अच्छी है, ऐसे जातक योग में लय योग को अपनाएं। और जिस जातक की कुंडली में शनि अच्छा है या शुभ फल देने वाला है, उसके लिए तो एकमात्र योग जो उसके जीवन का सहारा है, वो है कर्मयोग। उसे जीवन में कर्मयोग को ही अपनाना होगा, तभी वो व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ सकता है और केवल्य की प्राप्ति कर सकता है। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि राहु केतु का योग में क्या रोल है। तो राहु केतु की भी योग में बहुत विशिष्ट भूमिका है। जो हठयोग में षटकर्म बताए गए हैं, हठयोग में जो हमारे षटकर्म है, जल नेति, वस्त्र धोती, नौली, त्राटक, कपालभाति, ये हठयोग, ये षटकर्म की जो क्रियाएं हैं, इन क्रियाओं का नेचुरल सिग्निफिकेटर कोई प्लेनेट होता है तो वो होता है राहु। जिस जातक की कुंडली में राहु बहुत अच्छी स्थिति में है, ऐसा जातक षटकर्म के द्वारा अपने जीवन में बहुत सफलता प्राप्त कर सकता है। कुछ जातक ऐसे होते हैं जिनकी कुंडली में केतु 12वें स्थान में होता है, केतु भाग्य स्थान में होता है, केतु 5वें स्थान में होता है। ईश्वर प्राणिधान अर्थात ईश्वर में विश्वास, जो लोग ईश्वर में 100% विश्वास करते हैं, ईश्वर उनकी 100% मदद करता है। और जो लोग ईश्वर में 99% विश्वास करते हैं, ईश्वर उनकी सिर्फ 1% मदद करता है। तो मेरा आप सब लोगों से यही अनुरोध है, यही प्रार्थना है कि आप सब लोग ईश्वर में 100% विश्वास करें, ईश्वर प्राणिधान को अपनाएं और अपने जीवन में योग के द्वारा कैवल्य की प्राप्ति करें। अब एक छोटा सा जवाब देना चाह रहा हूं। हमारे एक कल नेपाल के भैया ने एक सवाल पैदा किया था कि ग्रह कैसे जानते हैं कि ये सूर्य का मंत्र है या ग्रहों की कोई भाषा होती है। तो मेरा उनसे सिर्फ एक ही कहना है कि जो ग्रह हम सबके ऊपर, पूरी मानव जाति के ऊपर, पूरी पृथ्वी के ऊपर प्रभाव डालते हैं, तो क्या वो भाषा को नहीं समझ सकते? उसका सीधा सीधा सा यही जवाब है। ईश्वर की भाषा को यदि कोई समझता है तो वो हमारे 9 ग्रह हैं, और 9 ग्रह ईश्वर की भाषा को समझकर हमारे अपने कर्मों के आधार पर हमारे जीवन में हमें अपने शुभ अशुभ कर्मों का फल प्रदान करते हैं। इसीलिए मेरा उनसे भी कहना ये है कि हमारे 9 ग्रह सभी भाषाएं जानते हैं, चाहे वो हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे अंग्रेजी हो। हम जब ग्रहों के प्रति अपनी आस्था मंत्र के रूप में या किसी भी रूप में जताएंगे तो निश्चित ही वो हमारे ग्रह हमारी मदद करेंगे। ค่ะมาส่งก้นนงกูก็เอกป้าพี่น้องมาปล่อยเฮากูก็คิงก้นเขาลูกเบิ้งส่งกูมาค่ะเฮาเลยจะล้างยี่ฝังในหมดส่งกูก็เฮาเลยอยู่ดีกันเย็นใจสิกำค่ะ ค่ะจือล้างช่วยจ่าค่ะอยู่ดีหมู่เจเว้งหมู่เจค่ะ แต่คนหลวงตั้งบกตั้งจุ้มค่ะข้าวเป็นได้คำเสือฉินบ้านแดงเบิ้งเมาเบิ้งจุงโก้ค่ะเบิกสูงค่ะข้าวเป็นนางท้อนแอนค่ะเบิ้งเมาดองคำค่ะสูงค่ะข้าวเป็นได้ใหม่เงินค่ะลูกจงโก้มาค่ะเหมือสูงค่ะเป็นได้หมกคำแดงหูซอยเบิ้งเมาค่ะข้าวเป็นได้สร้อยเสียงค่ะเป็นไล่เบิ้งเมาค่ะข้าวเป็นได้คำแดงจีนกวงได้เบิ้งเมาค่ะเหมือสูงค่ะข้าวเป็นได้สวยสองสุนสวยดีเว้งเก่าค่ะสูงค่ะข้าวเป็นได้ยอดเงินทุนอยู่บ้านหนองคำค่ะสูงค่ะพี่ดองคือเขาค่ะเป็นได้หมกสร้อยตุนพี่ดองสวยดีพี่ดองแล้วเขาก็กุกคนข้าวเขาเป็นได้หมกคำเย็นบ้านดองคำเบิ้งเบาค่ะ
บางสงขลาผู้จัดก้นดงเขากูโกค่ะเขาเป็นนายอ่องคำอยู่สวยดีเบิ้งเมามันดองคำไผ่จานค่ะ บางสงขลาเขาเป็นนายเส้นคนสวยเบิ้งเมาสวยดีเบิ้งเมาค่ะบางสงขลา บางสงขลาเขาเป็นนายช่วยเสียงคำฝองค่ะที่อยู่บ้านดองคำเบิ้งเมาค่ะเขาเป็นนายขึ้นสวยอยู่ดองคำเบิ้งเมาค่ะ บางสงขลาค่ะเป็นนางเสียงเจียงเบิ้งขอนมานนำใครคะเป็นนายจินห้องจิงปุนอยู่ดีเบิ้งเมามันต้นหงเบิ้งเมาเขาค่ะบางสงขลาเขาเป็นนางทวยอยู่มันต้นหงเบิ้งเมาค่ะ Myanmar, World Myanmar Monastery, Buddhist monk. Thank you. ပဋ္ဌာန္တဝိသေသစေယသရိမောလမိန်ပါမမြန်မာတိုင်ကျူ အရိယဓမ္မတိုင်ကျူ ကျွန်တော်ကတော့မြန်မာဥမောင်ဖြစ်ပါတယ်ဆရာတော်အတွက်ဘွဲ့လာယူတာလိုက်ရောက်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ ဗျာကျွန်တော်ကတော့မြန်မာပါဆရာတော်ဘွဲ့ယူရင်ကျွန်တော်ရောက်လာတာအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ လုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမကတော့ဒေါ်မြင့်မြင့်ຫນွယ်ခေါ်ပါတယ်နေတာတော့ပြင်ဦးလွင်ပါဗမာပြည်ပြင်ဦးလွင်မှာနေပါတယ်ဆရာတော်ဒေါက်တာအရှင်သာဝနာရဲ့ဘွဲ့ယူတပင်ကိုလိုက်လာပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် တောင်ကြီးကမမမိုးဖြစ်ပါတယ်ဒေါက်တာရှင်ဇဝနာရဲ့ဘွဲ့ယူကိုလိုက်လာတဲ့အတွက်အများကြီးဝမ်းသာပါတယ်ရှင် အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ကျမကမြန်မာလူမျိုးပါမော်လမြိုင်ကဖုံဖုံရဲ့တကားဒေါက်တာရှင်သာဝနာအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်မြန်မာမင်္ဂလာပါကျေးဇူးတင်ပါတယ် အဖွားမြန်မာပါမင်္ဂလာပါကျေးဇူးတင်ပါတယ် Today I am Nankhin Shui from Myanmar thank you very much ပါကျမတော့ဓမ္မေဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဇဝနာဟွာပြည်မြန်မာပါကျေးဇူးတင်ပါတယ် ပါရှင်ကျမတို့အခုချိန်ဆရာတော်ဥဇဝနာရဲ့ဘွဲ့နင်းတပင်ကိုရောက်လာရတာအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် Honorary PhD all in Oriental learning, chairman, distinguished Rev. guests, Vishuddhi Nana, honorable PhD in guests, Buddhism. and all ladies and gentlemen, I am Dr. Anana came from Myanmar. I am 40 years old and 45 years old and 25 in Buddhist service. I am so glad to speak in ceremony. May all be healthy, wealthy, and peaceful. Thank you very much for your attention. เมื่อสงข้าเมื่อใดเงินหอมเงินจมไหลมาฮอดถึงที่เมืองอินเดียนายุเดลีเมื่อวันที่2เองปากบาชิบกเดือน2ใน29วัน
ตีจันจอมนายกตีดีไล่ปันจมโคดอกเตอร์ตีเจ้าเขาปนด่าเหตุการณ์ศาสนาเจ้าเคอฝิ่งทงเดินเกกางวางก้นแก่นยินหนมยินกลมเจ้าไล่เจือเจ้าเจินไตตีวัดดงหอคำเมืองเมาเมื่อส่งดังสิ่ง Acharya Parashuram, former member Board of Studies in Astrology of Bhavnagar University, Gujarat. This is a biggest event ever seen by me throughout the nation. And just I would like to appreciate the gesture of Shastri ji, Ramakrishna Shastri ji and सत्य विश्वास जी दोनों को मैं मैं ज़्यादातर आपको ये बात बताने को आया हूँ कि आज तक पूरी दुनिया में लॉट ऑफ डिसिप्लिन चलती है, लेकिन कोई डिसिप्लिन नहीं बताती है कि आदमी का जन्म क्यों हुआ है, और कोई आदमी नहीं जानता है कि हम क्यों जन्मे हैं। तो विवेकानंद ने जो राजयोग के ऊपर लिखा है, वैसे अपने पुराणास and smritis in all these disciplines we have been given the cause and prawns of our life, so we are not knowing actually. तो मैं इसको आपके सामने क्लियर करना चाहता हूँ। आपने समुद्र मंथन की बात तो सुनी होगी। समुद्र मंथन में अमृत कुंभ मिला था। अमृत कुंभ इंद्र जी को स्टोरी दल अलग अलग है, तो इसमें ब्रह्मा जी भी बताते हैं। इंद्र जी को देने के लिए मोहिनी से भेजा गया। ये बात जो है ये आपको लगेंगी कि उल्टी फुल्टी बात लगती है, लेकिन इसमें उसी समय जो हमारे ऋषि मुनियों ने जो रिसर्च की थी राहु केतु के बारे में, जो राहु केतु के बारे में जो रिसर्च की थी वो ये थी कि राहु क्या है और केतु क्या है और वो आमने सामने क्यों रहते हैं। उसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए सैहिक नाम का राक्षस जो ऊपर मोहिनी के पीछे लपकता है, और ये जो राक्षस जो है ये अमृत पी लेता है। अमृत पीने के बाद में जो शिरच्छेद हो जाता है उनका, उसी कंडीशन में राहु केतु की एक रिसर्च थी अपने ऋषि मुनियों की कि सन पाथ एंड मून पाथ जो नॉर्थ में क्रॉस करता है वो राहु है, और नीचे का जो क्रॉस करता है वो केतु है, और राहु केतु आमने सामने रहते हैं। वो आमने सामने वाली बात उन्होंने इस चीज़ से एक्सप्लेन करी। अभी आप आगे देखेंगे कि राहु केतु के बारे में आपकी कुंडली में देखें तो आपकी कुंडली में भी आमने सामने हैं, तो आप देखें कि आपकी कुंडली में कहाँ है, जिस स्थान में है, क्योंकि जब उसका शिरच्छेद हुआ राक्षस का, उसी समय राहु मतलब धड़ में तो अमृत आना बाकी था, धड़ में उसकी अमृत की तड़प थी, मस्तक में अमृत आ गया था, तो धड़ में जो तड़प थी वो तड़प आज भी अपनी कुंडली में देखेंगे। जिस हाउस में आपका केतु होगा उस हाउस के बारे सब्जेक्ट के बारे में आप अपनी ज़िंदगी में पूरे तड़प रहे हैं। अपनी ज़िंदगी दो काउस पे है, एक तड़प और एक तृप्ति। हम जो राहु जहाँ है उस भाव से हम तृप्त हैं, और उस भाव से तृप्त होने के कारण हम उस भाव के बारे में ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं। लेकिन केतु जिस भाव में है इस भाव के बारे में आप ज़्यादा तवज्जो देते हैं, और यही हमारे जीवन के कॉज है, ये जीवन जीने के कारण है। इसी थियरी में अपना इवोल्यूशन है। समुद्र मंथन किया था कुछ ने, तो देवों और दानवों ने किया था, तब मानव नहीं थे, तब मानव नहीं थे, देवों और दानवों ने किया। अब आप देखिए कि आपकी कुंडली जो आप मानव है, आपकी कुंडली में बाकायदा राहु और केतु काम करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम दानवों से आए हैं और डेवलप धीरे धीरे हो रहे हैं और देव की तरफ जा रहे हैं। ये इवोल्यूशन बताता है। तो हम अमीबा में से नहीं जन्मे हैं। अमीबा इज अ मोनोसेलर एनिमल। उसमें से लास्ट एनिमल जो होता है वो मैक्सीसेलुलर सेल वाला होना चाहिए।
तो हम आपको कहते हैं कि यदि अमीबा में से आदमी का इवोल्यूशन हुआ है तो लास्ट आदमी नहीं हो सकता है, एलिफेंट होना चाहिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा सेल है। लेकिन इंसान को लास्ट एनिमल बनाया है, इस वास्ते आप कह सकते हैं कि डार्विन को एक प्रश्न पूछेंगे कि ये पृथ्वी का धकधकता गोला, आग का गोला था जब पहले, और इसमें गर्मी ही थी, तब जीव जंतु रह नहीं सकता, देयर वाज नो स्कोप फॉर एनी वेजिटेज, वो स्कोप नहीं था। उसी समय अमीबा कैसे आया? और अमीबा आप पानी के ग्लास में पनप क्रिएट करके बताइए, तो आप बता भी नहीं सकते हैं। और ये इवोल्यूशन की थियरी है, इसमें लास्ट में बोलता है कि हम चिंपांजी में से इंसान बने हैं। तो आज दुनिया की कोई भी स्फीयर में कोई चिंपांजी में से आदमी बनता देखने को तो मिलना चाहिए ना, देयर इज़ नो रिकॉर्ड एट ऑल। सो ये बताता है कि हमारा डेवलपमेंट राक्षस में से धीरे धीरे अच्छे इंसान, मॉडर्न इंसान और कल्चरल इंसान की ओर। तो मैं आज की एक कल्चरल पीढ़ी को रिक्वेस्ट करता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ कि यू आर द हाईएस्ट कल्चर पर्सन ऑफ द ह्यूमन रेस, यू आर द हाईएस्ट कल्चर मैन ऑफ द ह्यूमन रेस, एंड आपसे दुनिया आबाद होगी। और कहते हैं कि एटम बम बन गए हैं, साइंस ने जो जो डिस्ट्रक्टिव बातें बताई है, इससे मानव जात को कोई हानि होने वाली नहीं है, क्योंकि पृथ्वी का एक ध्रुजारी होता है, पृथ्वी की एक कंपन होती है, इसमें 100 हाइड्रोजन बम की एनर्जी होती है, फिर भी एक भी आदमी मरता नहीं है। यदि आदमी कुदरत के तरीके से जीता होता तो, क्योंकि आदमी ने ऐसे बड़े बड़े महलात बना दिए हैं, गिरते हैं इस वास्ते मरते हैं, लेकिन कोई पशु पंखी एक भी नहीं मरता है, पक्षी तो एक भी नहीं मरता है भूकंप से। तो ये बताता है कि जैसे जैसे हमने साइंस में मटेरियलिज्म को इंट्रोड्यूस करते जाते हैं तो हमारी इनसर्टेनिटी बढ़ रही है, और हमारी सर्टेनिटी बढ़ाने के लिए हमें एक्चुअली नेचुरल लाइफ जीना चाहिए। अब मैं एक ख़ास बात पे आपको एक टॉपिक के बात में ख़ास बात करना चाहता हूँ कि भाई इंसान जो है, আমার মনের মানুষের সনে, লালন ফকির, কেম ফ্রম বেঙ্গল। ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ, সর্বং খল্লিদং ব্রহ্ম। We can refer the Direram nature by Lucretius or similar. রূপ লাগি আঁখি জুড়ে গুণে মন ভোর, প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর। Who is? He is my nearest God. God means generates. G for generates, O for operates, and D for deliverance. The book of five rings, Bible. Bayu mogning solilong mohincho jyoti bosi sattani disho drumadin. Our body will be decayed, but not our soul. Parabo Brahmo is my shelter, my great want. We can say, save us, help us, protect us, and give us a religious consciousness. Thank you all. I have come from Hyderabad, and I am a retired meteorologist from India Meteorological Department, and my topic is on weather forecasting basing on our ancient knowledge. I have taken up all the samhitas and did my research, and which has been recognized by the University of Telugu University Hyderabad and conferred a PhD in the same concern. I can, it is God has given me an opportunity to predict the cyclone or any calamity, especially the rainfall, even to the nowcast. We can very well forecast well in advance, even 1 year in advance. So such a beautiful concept has been given. We are always struggling with 1 to 12 houses, 9 planets, 27 stars. So something which is more beyond this, we are not focusing on this. I request the organization and the higher authorities sitting on the dais, better we focus the forecasting side, because you have car, everything, money, house, everything, but your calamity, everything washed away, which you do not know, which can be predicted well in advance by this ancient knowledge. Thank you very much, sir. पटपीत मान हो तड़ित रुचि शुचि नौमी जन
last session of the conference, that is convocation and valedictory session. होता आरम रत्न धातमम तमग्ने भद्रं करिष्यसि तबे तत्सत्तमंगिरः. Suppose I am very studious, maybe it is not. Suppose I am knowing a little bit, maybe it is not. Suppose I had been a teacher of a university for 41 years, even then, forget about it. Whatever I am a little bit, it is only of, suppose, 25 years. Because in consideration of my age, I have not studied not more than 25 years. I am now 67. Sometimes I think, only 1 minute before, I had been talking with Saugataji, that sometimes I think that I am not befitting for this august gathering. So much of learning here. At least 5,000 years of knowledge that is accumulated here, that is reflected in their lectures. What amount of that can I understand? Can I digest? Even then, it is only because of the sincerity of Ramakrishna Shastri, it is only his sincerity, from the core of his heart, he loves me, he respects me, that I come here, that I stand before you, sir. Sir, my dear delegates, my dear friends here, in my humble opinion, only now it will start delivering the medals, the certificates, silver, gold, bronze medals, etc., etc., etc. It is not that a university is established for distributing these medals only. University is something where we add something to the existing stock of knowledge. I do not know what for did I bring these papers, some scribblings. No need at all. No need at all. Yes, very sincerely, the group of teachers, dedicated teachers, they are trying hard for the promotion of Sanskrit. Not only promotion of Sanskrit, all types of philanthropical works are organized by this Oriental heritage. Getting a certificate means the starting point of your education. With hands folded, I would request you all who would be honored now, who would be given different medals, they accepted humbly, and they think that today I start my search for true knowledge. He is awarded with Ashtadhatu Ganapati Murti. 3-day conference. First of all, foremost, thank you so much. And as he said that Ganpati always comes to me. This is, I think, the 136th Ganpati which is coming to me. So thank you so much. And of course, the last 3 days has been very, very enlightening, very, very lots of discussion, debate, and I think all of you enjoyed it. And at least I learned a few things. So I wish you all the best, and let's hope that we have a better and a greater conference next year. Thank you. Conferment of Doctorate Award to Ms. Kanchana Coimbra from Sri Lanka. Of the year 2016 selected the Man of the Year and Woman of the Year 2016. I announce the name of the Mr. Harihar Adhikari, Dang, Nepal. He was selected
He selected the Man of the Year 2016. Is Mrs. Nunjia Kopala from Italy. Woman of the Year, Mrs. Nunjia Kopala from Italy. For Global Outstanding Astrologer Award, it goes to Mr. David Hernandez from USA. To Mrs. Patrizia Neva from Italy. Next certificate for Global Outstanding Astrologer Award, Mrs. Nunjia Kopala from Italy. For Doctor of Delhi, Rev. Professor Dr. Anand Pine O. Lane from Myanmar. Postgraduate PG Pallavi Shastri. Next, Nivedita Das. Postgraduate on Vastu. Second, silver medal. PG on Vastu. Next, 10. Honorary Doctor of Oriental Learning, PhD. Subramania A. Bangalore, Karnataka. Jonardhanasa S. Bangalore, Karnataka. Nathan Rao for Vijayan Nair from Kerala. Basa Bharaju RN from Karnataka. Rudrasa S. भारतीय ज्योतिष्य विद्या केंद्र मैसूर channeling Sri Ramakrishna Shastri and Satya Biswas. Om Bhadram Karne Vishnuyaama Devaah Dattanaratya Prayam Tado Davino Davira Bhatem Nisham No. বেঙ্গালুরু সুদীপ আচার্য আগরতলা ত্রিপুরা টি আর রামচন্দ্রন যুগল আম্বালা ক্যান্টনমেন্ট হরিয়ানা পণ্ডিত বিরিঞ্চি বিহারী ত্রিপাঠী মহাকাল ভৈরব অ্যাওয়ার্ড
Nayanachar Kumar, Karnataka.